tournament. On the other side, nice gem. Sultan Warriors are in for their first game of the tournament. On the other side, nice gems. They are here for that must-win clash. And it's time for the toss in the middle. We got the two captains. Wasim from Sultan Warriors, nice gems. Their skipper there. And we got the three officials over here. It's time for the coin flip. Wasim is going to call. Here is the call. It's come out as heads. वसीम, आपने टॉस जीता, क्या करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? वी आर बैट फर्स्ट। किस तरह की कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं आज के मैच में? पहला ही मैच है, ये वाली कॉम्बिनेशन का देखेंगे, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बिग JKPL के बारे में आपका क्या कहना है? ये तो काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले भी जो यूनिवर्सिटी में इसका एक फर्स्ट एडिशन खेला था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि तब किसी ने ऐसा टूर्नामेंट नहीं निकाला था ना, मतलब ऐसे इंटेंशंस थे कि ऐसी टूर्नामेंट खेलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये लगा कि यहाँ आके कि ऐसा टूर्नामेंट खेलना। फिर चलिए, विश यू लॉट्स ऑफ लक इन द गेम। थैंक यू। द कैप्टन फ्रॉम नाइस जेम्स, कप्तान सिक्का आपकी किस्मत में गिरा नहीं, क्या करना चाहते हैं अगर आप टॉस जीते? नहीं ठीक है सर, विकेट अच्छा है, बैटिंग बॉलिंग ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इस पे। कल भी हमने देखा विकेट अच्छा ही खेल रहा है। कोई चेंज आज के मुकाबले में? हमारे 3 चेंजेस हैं आज, तो हाँ बस। चलिए, क्या मैसेज रहेगी जाते जाते इस पिच के नाम और JKPL टूर्नामेंट बहुत अच्छे लेवल का हो रहा है, विकेट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, आगे आगे और अच्छा होगा मुझे पता है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू। So the news from the country, Sultan Warriors won the toss and they're going to bat first. Afternoon and adab to all the listeners out there on JK Sports Time Facebook, moreover YouTube. I am Munawar Tanveer and here I got Sheikh Nazir in the comment box. The news from the countries, Wasim Katsur won the toss and without any hesitation he decided to bat first. And it's time for bat speed and the ball rolling. The two openers in the middle is going to be Asim Bashir and Wasim Katsur to take the lead role in today's game. And on to the bowling side is going to be Lovepreet Kamboj to bowl. What a name he's got. He's going to spread love here. And Kamboj is his, is it his surname or his full name? Lovepreet Kamboj is going to bowl to the likes of Asim and Wasim Katsur. This is the Sultan's prominent pair in the middle. Nice gems in a must-win clash. Sultans, they are starting the campaign in the tournament. They are opener of the tournament. First ball isn't that far. On strike is going to be Asim Bashir. Lovepreet to Asim. Worked away, scare on the on. Field in pursuit. Will he get to the ball? Ball is racing away for 4. Stylish shot coming up the bat of Asim Bashir. And he's off the mark with the boundary. So is Sultan Warriors Baramulla. And it's 4 for none. Star of Tangmug is underway and off the mark with the boundary. Delightful shot. Eyes on the ball. Perfect outing for Asim straight away. Up and running. 4 of them. 4 for none in the very first over. And thank you very much, brother Imran. Once again, little upish, but it's gone wide of the man who does well, who took pace of that shot and saved what could have been 4 and keeps it down to a solitary single. 5 for none. And please welcome Sheikh Nazir in the com box. अस्सलामुअलैकुम, धन्यवाद मुनव्वर। हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे सभी श्रोताओं का JK स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, साथ में लाइव स्पोर्ट्स टीवी। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला शुरुआत कर चुके हैं इस पहली पारी की। वसीम काचूर और आसिम बशीर ने शुरुआत की है बल्लेबाजी में और नाइस जेम्स के लिए लवप्रीत कंबोज ने शुरुआत की है गेंदबाजी में। पहली गेंद बनाया था चौका, उसके बाद एक सिंगल और अब जाकर के वसीम काचूर ने भी सिंगल से खाता खोल लिया। तो कुल मिलाकर 6 रन आ चुके हैं पहले ओवर में 3 गेंदों से। इस बार सम्मान दिया, अच्छी गेंद थी आसिम बशीर के लिए। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बिग JKPL में अपना पहला मुकाबला नाइस जेम्स क्रिकेट क्लब के विरुद्ध, और नाइस जेम्स ये दूसरा मुकाबला खेल रही है इस प्रतियोगिता में। कुल मिलाकर 6ठा मुकाबला, आज के दिन का दूसरा और अंतिम मुकाबला। पहली पारी आसिम बशीर 5 पे 3 गेंदों से एक बेहतर क्रिकेट, एक अच्छी शुरुआत पर नाइस जेम्स चाहेगी कि थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए शुरुआत में बल्लेबाजों को। लीजिए
कंट्रोल की बात हो रही थी और यहाँ आसिम बशीर को चलता किया और पहला विकेट गंवाया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने। लवप्रीत कंबोज को मिलने वाली पहली सफलता। 5 बनाए आसिम बशीर ने, 4 गेंदों का सामना किया और 6 पे पहला विकेट गंवाया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम ने। तो खराब शुरुआत यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए आसिम बशीर द्वारा। यह देख लीजिए, अच्छी गेंद थी लवप्रीत की, एक सीधी स्पॉट गेंद पड़ने के बाद सीधी रहती, उतना ज्यादा उछाल नहीं था जो उपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज आसिम बशीर। सीधे सामने की ओर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद सीधे स्टंप पे जा टकराई और पहला विकेट सुल्तान ने गंवा दिया है इस छठे मुकाबले में बिग JKPL की अगर हम बात करें। Down the wrong line, wrong shot selection. Paid price for that. He's on his way. Sultan Warriors early dent. Asim Bashir blown away. That brings number 3. Straight away expose it. And it's up to the number 3. Arjun Singh comes out to bat with 6 on the board at the cost of 1. Wasim Katur is left helpless on the other end. His partner is on his way. He perished. Not a wicket taking ball, but it was just like that. You miss high hit, and that's it. And Asim is gone. The one Nazir believed that was pitched one, easy one. Not a delivery that would have hurt him too much, but he played down the wrong line and misread it completely. A fuller one, a good tactic from left arm spinner Lawpreet Kamboj. He was going to hit the target. He does well and gets his man in the end. 6 for 1. Sultan Warriors are batting first against the likes of Nice Gems. Azim Rathra arrived for today's game, and this one worked away but find us a backward upscare in place. Not for runs. Successful overdone. It is 6 for 1. Sultan Warriors batting first against the likes of Nice Gems Cricket Club. Nice Gems, they're already one down in the tournament. They lost the first game, and there was a massive defeat as far as Nice Gems are concerned. And Sultan Warriors would love to start on a winning note here. And the beauty of the tournament is 2 teams which will finish at the top of the table from Group A and Group B are going to qualify for the semi-finals. Others will play the quarter-final. So you got to make it count here. An opportunity knocking on your doors. 6 for 1 after the completion of first over. Arjun Singh and Wasim. LA has got the ball from University, and Jammu University and LA will operate. Wasim, the captain of Sultan Warriors, will remain on strike. Without any hesitation, he decided to bat first. Not a good one, but he can't keep that one away from the man at mid-off. Straight to man at mid-off, just a single. Low full toss. But Wasim Katsur, there is going to be a huge amount of pressure on his nerves at the moment. He lost his cool head from other end. That is Asim Bashir. Eyes were on Asim today. And after a long time, Asim back for Sultans here. And looking at that first ball 4, that was telling a different story, that Asim will take time. He will try to do something special with the bat, but that wasn't the case. We saw beauty from, in terms of that big wicket, we call it a beauty, but that wasn't a wicket taking ball to great extent. It was better to go with a straight bat and keep it away. Little early into the shot and down the wrong line cost him heavily. That was a costlier move from batter, as he perished 8 for 1 after 1.2. Now it's down to Wasim and Arjun Singh in the middle. Wasim batting on 2 of 2, runner ball captain, and he's got Arjun Singh number 3. He's going to play his spot from other end. Captain waits for LA. That is a delightful, that's captain for you. That 6 brought to you by Just Bukhara.
pristine class. Wasim Kasur, you beauty. Into the double figure Sultan Warriors. And Shaukat, the cameraman from JK Sports Time, is going to love this one. Oh, delightful. Lovely timing from Wasim Kasur, and is up and running with that delightful ball of spec drive. Back past the ball and all the way. 14 for 1. We are into the second over. As we watch it. Oh, half tracker pulled. Is he in danger? No way. That's 6 number 2 for captain here. That 6 brought to you by Just Bukhara. 20 for 1. First one, fuller one. Take a look. Galaxy of guest us over there. Some of the big names. And talking about that 6 half tracker, first one was a fuller one. Allowed the batter to break free. The next one is half track. It's a freebie. And Kasur says, thank you very much. It was just like that creamy one. And he creamed it away with that pull shot. So strong at bowler Spectre and that pull shot. Wasim Kasur. 20 for the loss of a wicket. We're into the second over of the game. May I remind you, this is big JKPL season 1 and match number 6 underway. The second one for today being played between Sultan Warriors and Nice Gems. Nice Gems lost their first game yesterday against VSG. Soft hands. Smart cricket from captain. And there is going to be that responsibility on his shoulders today. Bit nervy, tricky situation for captain. Losing his partner. And the combo is known for making things easy for Sultan Warriors. And he's gone. He lost his partner early today. Now it's up to Arjun. He has to play his part alongside captain. New gun brought in the side of Sultan Warriors. He has a role to play. It's 21 for the loss of 1. LA once again. Arjun is right behind that one. 2 done. 21 for 1. तो समाप्त 21 बने हैं 2 ओवर में 1 विकेट गंवाया है आसिम बशीर के रूप में अर्जुन सिंह और वसीम काचुर। हालांकि 2 छक्के पिछले ओवर में एलए के विरुद्ध वसीम काचुर का आत्मविश्वास बढ़ा होगा। अगर उनके विरुद्ध आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो फिर निश्चित तौर पे आपको खमियाजा भुगतना जरूरी है, क्योंकि वो विस्फोटक अंदाज के खिलाड़ी हैं, विस्फोटक बल्लेबाज है। खूबसूरत शानदार विजुअल्स, कमाल के दृश्य, लाजवाब। पर ऐसे में बिग जेकेपीएल का ये छठा मुकाबला, पहली पारी 21 रन बने हैं 2 ओवर में 10.50 इस समय करंट रन रेट। लवप्रीत कंबोज 1 ओवर 6 रन 1 विकेट आसिम बशीर को चलता किया था शुरुआती ओवर में, पर उसकी भरपाई के लिए एक साझेदारी की आवश्यकता है यहाँ से वसीम और अर्जुन सिंह को। उस साझेदारी का काफी योगदान रहने वाला इस पारी में। ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो एक बेहतर और शानदार ये मुकाबला, अच्छी खासी धूप, लवप्रीत ने ओवर की शुरुआत करते हुए और अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ टर्न होती हुई एक एंगल बना करके सीधे विकेट कीपर का दस्ताने में। और थोड़ा सा आत्मविश्वास बरतना जरूरी, संयम के साथ बल्लेबाजी धैर्य रखना जरूरी है यहाँ पे वसीम काचरू को। टीम के कप्तान है और कप्तानी पर ही पारी खेलनी जरूरी है। इस बार हल्के हाथों के साथ ऑफ साइड में उसको दिशा दे दी थी सीधे फील्डर के पास, पर रन लेने का प्रयास था नहीं। ये देखते हुए कि अतिरिक्त जोखिम उठाने का प्रयास नहीं करेंगे गेस्ट गैलरी सामने। और ऐसे में ये छठा मुकाबला, पहली पारी इस प्रतियोगिता की। बहुत बेहतरीन, खूबसूरत प्री स्ट्रोक, ट्रेडमार्क वसीम काचरू, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका। इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या अब जाकर के 25 तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये खूबसूरत स्ट्रोक वसीम काचरू का रहता है, थोड़ा सा लेग साइड की ओर और उस जगह बना करके, और उनका बेहतर स्ट्रोक रहता है, उनका ट्रेडमार्क स्ट्रोक रहता है, और ज़्यादातर इस स्ट्रोक को खेलना पसंद करते हैं वसीम काचरू। 19 पे 8 गेंदों से एक बार फिर ऑफ साइड में धकेला जरूर था और एक रन की मांग जरूर थी, पर अर्जुन सिंह ने मना किया कि अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा हड़बड़ाहट मत दिखाइए। 9.38 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना, बेहतर चौका आ चुका है और वह 4 गेंदों से 4। लवप्रीत कंबोज अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, 19 9 गेंदों से वसीम काचरू। शॉट बहुत बढ़िया, सीधे फील्डर के पास सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में, 25 से बढ़कर 26। अर्जुन सिंह सामने 1 पे 3 गेंदों का सामने किया, 10 से 20, 200 के स्ट्राइक रेट से वसीम काचरू। आसिम बशीर के साथ आज पारी प्रारंभ की थी, पर आसिम बशीर मात्र एक चौका लगाने के बाद आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। बोल्ड हुए थे वहां पहले ही ओवर में लवप्रीत के, और वो विकेट आया था उनका।
1.5 पे 11 रन देकर के एक विकेट। अर्जुन बाएं हाथ के सामने, अर्जुन एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि एक छोर से अगर बल्लेबाजी बेहतर वसीम काचरू कर रहे हैं तो फिर दूसरे छोर से आपको उनका सहयोग करना, उनका साथ देना जरूरी। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी। एक एक रन काफी महत्वपूर्ण है। पहला मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला खेल रही है बिग JKPL में, और वहीं पे नाइस जेम की टीम दूसरा मुकाबला, और पिछला मुकाबला वो वैली स्टार गांधरबल से हारे हैं। यहाँ पे वो जीत के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे, और वहीं पे सुल्तान वॉरियर्स की टीम भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि अगले 2 मुकाबले पैंथर्स के साथ तो फिर वैली स्टार गांधरबल के साथ, तो अब सभी के साथ साथ आने वाले मुकाबले और भी बेहतर होने जा रहे हैं, संघर्षपूर्ण मुकाबले होने जा रहे हैं, क्योंकि नॉकआउट स्टेज में और भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। फिलहाल 26 पे 1-3 के बाद चौथे की शुरुआत, और एक और परिवर्तन गेंदबाजी में राघव ठाकुर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल कप्तान द्वारा। अलग प्रकार की सोच, पावर प्ले में ही आप 3-4 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और उसका कारण यह कि आपको एक और विकेट, जानते हैं कि वसीम काचरू सेट हो गए तो फिर वो तहस नहस कर सकते हैं गेंदबाजी को, और उनके साथ अर्जुन सिंह भी जो पहला मुकाबला खेल रहे हैं सुल्तान के लिए इस प्रतियोगिता में। 26 पे 173 प्रोजेक्टेड स्कोर। आकाश चौधरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि उससे पूर्व स्कोरबोर्ड पे डिस्प्ले हुआ था ठाकुर पर, अब आकाश चौधरी को लेकर के आए गेंदबाजी में। स्पिन आक्रमण दोनों छो से काचरू 20, अर्जुन सिंह 1, सुल्तान 26 पे 1-3 के बाद चौथे की शुरुआत। पावर प्ले ऑन, और 20 ओवर के इस मुकाबले में सुल्तान की टीम को बल्लेबाजी का अवसर मिला है पहली पारी के आधार पर। नाइस जेम क्रिकेट क्लब के बाद तेज गेंदबाज चौधरी, और पहली गेंद खूबसूरती के साथ वसीम काचरू ने खेला। कोई भी मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, गेंद सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका, 4 और खाते में। काचरू पहुंच गए 24 पे 11 गेंदों से। बहुत बेहतर शॉट, और पावर प्ले में वसीम काचरू बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करना जानते हैं, और जानते हैं कि यहाँ से पावर प्ले में आपको 60-70 रन जोड़ने जरूरी हैं, तब जाकर के आप एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं नाइस जेम्स के विरुद्ध। और अभी तक उसमें सफलता भी मिली है, कुछ बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से। 30 पे 1, 3.24 11 गेंदों से वसीम काचरू, और उनके साथ अर्जुन सिंह 1 पे है। 4 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं। पहला ओवर आकाश चौधरी का, और चौधरी का स्वागत पहली गेंद पर वसीम काचरू द्वारा। अगली गेंद लेकर के तैयार, एक बार फिर उसी खाली इलाके को टारगेट किया, और गेंद एक बार फिर जाएगी बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों से 2 चौके। अब काचरू के विरुद्ध थोड़ा सटीक लेंथ पे गेंदबाजी करें, सही दिशा, सही लंबाई और नियंत्रण दिखाएं, क्योंकि उनको सेट होने का अवसर ना दें। ये प्रयास होना चाहिए वहां पर कप्तान का, गेंदबाज का, जहां तक नाइस जेम्स का सवाल है। पर काचरू एक बेहतरीन और चतुर चालाक बल्लेबाज है, जानते हैं कि ये वो समय है पावर प्ले का जहां फील्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन है, उसका इस्तेमाल करना जरूरी, और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। 2 गेंदों से 2 चौके आ चुके हैं इस ओवर में। एक बार फिर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, पर फील्डर तैनात है, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में। 35 पर जा पहुंची रन संख्या। अर्जुन अब सामने होंगे 29-13 गेंदों से। एक बेहतर पारी खेल रहे हैं, पर दूसरे छोर से स्पोर्ट्स चाहिए अर्जुन का। बड़े स्ट्रोक के साथ साथ सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी है, अतिरिक्त दबाव आएगा फील्डर्स पे, टीम पे। नाइस जेम की अगर बात करें, आकाश चौधरी 3 से अभी तक 9 खर्चे हैं। पहला ओवर है उनका चौथा पारी का। 20 ओवर की यह पारी रहने वाली है। अच्छी खासी धूप। यूनिवर्सिटी ग्राउंड जम्मू, बिग JKPL, JK स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और लाइव स्पोर्ट्स टीवी के लाइव प्रसारण। धन्यवाद सभी व्यूवर्स का, और उसके अलावा स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। शाइनिंग स्टार एंथम की अगर हम बात करें, हवा में गेंद गई है उस ओर, फील्डर और प्रयास था पहुंचने का, पर कैच को पकड़ नहीं पाया यार। एक बढ़िया एफर्ट होता, शायद इस कैच को पकड़ लेते तो फिर परिस्थितियां कुछ और होती। एक हाथ हैंडल से छूटा जरूर था अर्जुन सिंह का, और नजदीक पहुंच चुके थे। आकाश शायद खुश नहीं है फील्डर से, उनकी मानसिकता कह रही थी कि कैच पकड़ा जाना चाहिए था। 37 पे 3.4, अर्जुन 3 पे। अर्जुन को अधूरे मन से शॉट खेलने यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के स्ट्रोक खेलेंगे तो फिर बेहतर रहेगा। ये गेंद सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर पहुंचा दी। एक और चौका जस्ट बुखारा सामने, सीधे बल्ले से 4 और खाते में अर्जुन के, और इस चौके से वो 7 पर पहुंच गए। अर्जुन सिंह बेहतर स्ट्रोक, खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पे चौका बटोरा।
4 रन और खाते में और 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि 41, 1 विकेट पे 3.5, 7 पर अर्जुन, वसीम का 34। आखिरी गेंद इस ओवर की। आकाश चौधरी ने 3 चौके, 1 सिंगल, 1 डबल कुल मिलाकर 12, 14, 15 रन अभी तक खर्च किए हैं। अपील की जा रही है जोरदार, पर अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं। थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। फिलहाल 41 पे 1, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। TV umpire to direct. DRS sent upstairs asking TV umpire to assist and look into this one. Decision pending. Wait a while. DRS pending. Look at that one where the ball is pitching. It's hitting around that knee roll area. So let's see what's in store. TV umpire is taking a quick look of that. He's trying to find it from different angles. I think that's a good move from this angle. It will tell us because ball isn't that far from bat over there. We have the ultra edge also available. He's going to find it out properly. But from this angle, looks it's hitting above the knee roll, little above the knee roll. And once it is hitting above the knee roll, that's always, there is going to be always that height in mind. So now next move is going to be that ball tracker coming up, and ball tracker will surely let us know whether it's pitching in line, where is the impact, and where the ball is going. There are going to be a couple of things will determine what it is. Let's see what is loading, and TV umpire is looking into this one seriously. And that's the beauty of big JKPL. We have DRS system available. We have ultra edge. We have sneak available. Take a look. I don't think there is bat involved. I think bat is little behind. And ball is hitting the pad first. Look, there it is. Now the question is from this angle. He's just trying to find it out where the bat and the ball is in contact. Once it comes close to the pad, and we'll have to wait and watch what will be the decision. Pitching outside off. An impact is umpire's call. So what is in store? What is in store? Let's see. He's going to make the decision. And he's not out. He survives. He gets away with that one in the end. And review will... They will return the review. So no problem there. They can't burn it. And it stays because of that umpire's call. Impact is umpire's call. Pitching outside off. So it's not out. 41 for 1 after 3.5. And he's lucky to survive. Gets away with that one of the final ball, Arjun Singh. Earlier on there was an opportunity gone down. Now he gets away with that one. TV umpire to direct, and finally has given his verdict. It's gone in favor of batter because of that impact which was outside the off. 41 for 1 after 4. Look at that one. Beautifully driven, but straight to the man at mid-on. But talking of the shot selection and the body posture, timing, extension of arms, this man possesses all these things. Wasim Kasur. This time, this is going to be the big gamble. Wicketkeeper is coming. Should be taken. It is. And that's the big loss. This time he lost his cool. I was just talking about his shot selection. We saw that driven to mid-on. The next one is, it straight went up in the air. And Sagar Sangotra has his man. And captain departs. Big fish.
And it's the second one down here for Sultan Warriors. 41 for 2. And Wasim Qasr is on his way. 29 of 15. Joy in their camp. Joy in the hurdle. Look at that when it went up high up in the air. Good catch. Nicely held by wicketkeeper. So captain got to go. Sangotra finds his man. Asif Rasool comes out to bat at number 4. 29 की पारी समाप्त। वसीम काचरू के एक आसान सा कैच थमा दिया विकेट कीपर को और इस प्रकार से अपना विकेट गंवाने के बाद अब दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के 41 पे 2, 4.2 ओवर की गेंदबाजी। सागर संगोत्रा को सफलता मिलती हुई अपने पहले ही ओवर में परिवर्तन किया गया था। आकाश का ओवर काफी खर्चीला, उसके बाद संगोत्रा को लेकर के आए और दूसरी गेंद पर उन्हें वसीम को चलता किया। अब आसिफ रसूल और अर्जुन सिंह, ये दायित्व उन्हें निभाना यहाँ से, क्योंकि उनके कंधों पर दायित्व है और उस दायित्व को निभाना बेहतर तरीके से आसिफ और अर्जुन को, और किस प्रकार से उस दायित्व को निभा पाएंगे, किस प्रकार से यहाँ से बेहतर पारी खेल पाएंगे, सुल्तान की टीम को एक बेहतर पोजीशन में ला खड़ा कर देंगे, एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य इन दो बल्लेबाजों को करना, क्योंकि साझेदारी काफी महत्वपूर्ण है। आपके पास विकल्प हैं बल्लेबाजी में, पर शुरुआत में आपने 2 बल्लेबाज गंवाए हैं। 41 पे 2 विकेट। 5वां ओवर संगोत्रा। आसिफ रसूल के लिए अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, स्टंप्स को कवर किया था, फ्रंट फुट पर आकर के एक कदम आगे निकाला था और बैट और पैड में लाने का प्रयास था वहां पर। आसिफ रसूल अभी अभी आए हैं, हालांकि एक अनुभवी खिलाड़ी है और उस अनुभव का इस्तेमाल करना जरूरी। बेहतरीन शॉट पर फील्डर वहां पे तैनात, सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाता खुलता हुआ आसिफ रसूल का। अर्जुन सिंह साथ पे अब सामने 42 पे 2, 5वें ओवर में 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बना रही है टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, जिन्हें आज पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला टॉस जीतने के बाद। नाइस जेम्स क्रिकेट क्लब के विरुद्ध और 2 विकेट दोनों ओपनिंग बैट्समैन जो है वो वापस जा चुके हैं। पहले आसिम बशीर 1 रन का योगदान दिया, फिर 5 रन का योगदान दिया, एक चौका लगाया था, उसके बाद 29 का योगदान वसीम काचूर ने और दूसरे विकेट के रूप में वो आउट हुए हैं 41 पे। एक बार फिर हवा में उछली है गेंद, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, आसान सा कैच, लीजिए अर्जुन सिंह, चलिए वापस। 7 बनाया 8 गेंदों से, 42 पे तीसरा गंवाया सुल्तान ने। 4.5 में 42 पे 3 विकेट गंवाए हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने। अर्जुन की पारी हो गई समाप्त। 8 गेंदों तक सीमित रही, 7 बनाए और पूरी तरह से शुरुआती ओवर्स में दबाव में इस समय टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। Well, I can't understand why he's in the side. It will be harsh, Dick. But he's gone here. You got to give credit to the bowler, Sangotra, young lad. Look, he's a teenager with the ball, and the second one for his delight here in the Sam over. He removed the captain, and now Arjun on his way back to pavilion. What kind of a shot it was? Well, Arjun knows better than me. Well, I can't understand what was that. Yeah, ball did hold up a bit in surface. Was that needed? I don't think there was a need of such a big shot. Ridiculous. And he's on his way back to pavilion. Tajimal Baba is in, tall lanky lad from Budgam. He comes out to bat at number 5. He's known as a big hitter of cricket ball. He's got also title of sixer man in Budgam. Well, now he comes out to bat. Not an easy surface to bat on for batter like Tajimal Baba. And on the other side he's got Asif is in the frame at the moment. But the situation is tricky and nervy at the moment as they are 3 down. Asim and Arjun Singh. Well, Arjun knows better than me what kind of a shot that was. I'm going to surely ask Arjun what was in his kitty on that occasion. Tajimal Baba to face the likes of Sagar Sangotra. Sangotra has picked up 2 of his 5 balls and gone for just a solitary single. And what a start for Sangotra here in this game. This is the 6th match and the second one for today of Big JKPL Season 1 with a slip in place for Tajimal Baba. First one, good delivery. A tall lanky lad. It's hard to bend his back.
But he does well on that occasion, making an adjustment and keeps that one away. 5 gone, 3 for 42. The last over mandatory power play is coming up, and Nazir is coming up in the com box. पांच समाप्त 42 में 3 और अभी भी 15 ओवर का खेल शेष है। पर सुल्तान की टीम की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने गंवाए हैं। 3 दिग्गज खिलाड़ी, पहले विकेट के रूप में आसिम बशीर, दूसरे विकेट के रूप में वसीम काचुर, तीसरे विकेट के रूप में अर्जुन सिंह और अब तजमुल बाबा और आसिफ रसूल। हालांकि तजमुल को खाता खोलना है, 2 गेंदें एक गेंद खेली है और 2 गेंदों से 1 रन आसिफ रसूल ने बनाया है। 5 ओवर की गेंदबाजी में 42, 3 विकेट पे। पर गेंदबाजी की बात करें एनजीसीसी की बहुत बेहतर गेंदबाजी, क्योंकि आपको 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वापस लौटने का अवसर था और वो तीनों बल्लेबाज इसमें डगआउट में जाकर के बैठ चुके हैं आउट होकर के। आकाश चौधरी 1 ओवर 15 रन, खर्चीले साबित जरूर हुए हैं। दूसरे स्पेल में वो गेंदबाजी करेंगे। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा, 6 ओवर का पावर प्ले, फील्ड रिस्ट्रिक्शन, और उसका उतना ज्यादा लाभ उठा नहीं पाए सुल्तान के बल्लेबाज, उनकी टीम, क्योंकि अब 43 पे 42 पे 3 विकेट गंवा चुके हैं। और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जिनमें आसिम बशीर जैसे खिलाड़ी, वसीम काचरू और अर्जुन सिंह जैसे खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। पर काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। यहां से इन 2 बल्लेबाजों को बेहतर क्रिकेट खेलनी जरूरी। आकाश चौधरी ने ओवर की शुरुआत करते हुए पहली गेंद इस बार कंट्रोल में, ये शॉट बेहतर तरीके से सीधे फील्डर के पास गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन संख्या की है कोई इजाफा नहीं, 42 पे 3। छठे की शुरुआत हो चुकी है 163 प्रोजेक्ट स्कोर जो करंट रन रेट है उसके मुताबिक। पर सुल्तान को यहाँ एक अच्छा टोटल खड़ा करना है तो फिर बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बेहतर प्रयास करने जरूरी है। सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी है और गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी की जरूरत। और नीचे रहते हुए गेंद पड़ने के बाद पूरी तरह से बीट खड़े वहां पर आसिफ रसूल भी चौंक गए, पर गेंद आई विकेट कीपर के पास, काफी दूर है स्टंप से। रन संख्या में कोई भी 2 डॉट गेंदें। और बात हम कर रहे थे कि आपको 1-1 रन से इस पारी को चलाना है, क्योंकि जितना आप रन गति पे अंकुश लगने देंगे उतना दबाव आएगा बल्लेबाजों पर, और फिर उस दबाव से निकलने का प्रयास, तो वहां पे विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अपोजिट के टीम के। 42 पे 3, 5.2, छठा ओवर। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब, ये लाइव प्रसारण अब तक जम्मू यूनिवर्सिटी से बिग JKPL के अंतर्गत छठा मुकाबला। एक बार फिर आसिफ रसूल के लिए अच्छी गेंद, और यहाँ पे अच्छी वापसी आकाश चौधरी ने इस ओवर में की है। सटीक लेंथ पे गेंदबाजी होती हुई, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरी तरह से नियंत्रण है अपनी गेंदबाजी में। जब आप इस प्रकार की गेंदबाजी करते हो तो फिर आप बेहतर तरीके से दबाव बनाने में सक्षम हो जाते हो। वो चीज की है इस ओवर में आकाश चौधरी ने। 42, 3 विकेट पे छठा ओवर। खूबसूरत और बेहतरीन दृश्य है अगर मैदान की बात करें। अच्छी खासी धूप, अच्छे खासे दर्शक भी, क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के प्रशंसक इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए पहली पारी तजमुल बाबा अब सामने होंगे। 2 पे आसिफ रसूल 6 गेंदों से 5.4 के बाद 43 पे 3 रन संख्या इस समय। पहली पारी के आधार पर छठा मुकाबला, कल 2 मुकाबले एक बार फिर लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे ठीक सवेरे 10 बजे से लाइव प्रसारण लेकर के। आप एंजॉय कर सकते हैं इस लाइव टेलीकास्ट को, जो कि जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और लाइव स्पोर्ट्स टीवी के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी ग्राउंड से। आकाश चौधरी मात्र 1 रन, अच्छा ओवर कटा अब तक, ज्यादा रन खर्चे नहीं है। एक बार फिर रन नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया ओवर, किफायती कसीवी गेंदबाजी, अनुशासन दिखा इस ओवर में, क्योंकि 4 डॉट गेंदे, 1 सिंगल, 5 गेंदों में मात्र 1 रन। पिछला ओवर 15 का गया था आकाश चौधरी का, पर यहां वापसी बहुत बेहतर। 5.5, 43 पे 3, बाबा सामने 0 पे। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। आसिफ रसूल नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, तजमुल बाबा सामने 7.37 करंट रन रेट, और साझेदारी निभानी जरूरी है। पार्टनरशिप मात्र उपाय आपके पास है अगर यहां से आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। आखिरी गेंद ओवर की, शॉट अच्छा है, फील्डर से हल्का सा फंबल जरूर हुआ, पर दूसरे प्रयास में जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, दोनों बल्लेबाजों के पास समय था सिंगल लेने का। ओवर से आए 2, आकाश चौधरी के 2 ओवर में 17, 6 समाप्त, 44 पे 3, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। It started on a high, ended on a low, and it just like that, power play says hi, hello, Sultan.
with losing 3 wickets and could only manage 44 and last 2 overs. We saw a couple of runs coming. It was 41 after 4 and it's 44 after 6. Just 2 runs coming in a space of 12 balls. That's going to explain it, how things unfolded, what happened in last 2 overs. Mix room, ready-made room, punches it away. Pills are doing good job today. This young army from Nice Gems are doing wonders on the field. Couple of boundaries saved already in the game. Within 6.1 we saw that from the fielders, that intent could be tight. Not a clean stop that allowed a single. Asif Rasool would have been man in question. He would have been in all sorts of bother. It would have been Tajimal Baba, to be precise. But he gets away with that when he was forced by his partner to respond. No slip. And that one flies. Down the ground he goes. Straight like an arrow. 6 more. Tajimal Baba with that 6. It's 50 up for Sultan Warriors. And that 6 brought to you by Just Bukhara. Straight down the ground. Look at that one again. Tajimal Baba for you. 6er man of Badgam. 6er king of Badgam. Oh, pitched 1 easy pickings. And that was in his zone. On trade of 5. Again in the same direction. This time up the surface. All along the copper. Down to the long on for a single. 53 for 3. This is the 7th over we are in. This over is a 9 coming of 4 balls. With an offer, Asif Rasool inside out he goes. Where is this one going? And I think that's gone all the way. 6 more. 6 number 2. And Sangotra losing his line in this over. And take a look again. That was with an offer. Asking to be hit. Invites him. Invited Asif Rasool, and Asif Rasool says thank you very much. He grabbed that opportunity with both hands. Extension of arms. 59 for 3. He's going to pick one. He will keep the strike. 60 after 7 overs. This over 6-12 and forcing the make 16 of the over. And first over that was a tight one, but this over gone for plenty. 16 runs in this over. Overall he's gone for 17 off his 2 and picked up 2 wickets. 59. It's 60 for the loss of 3 after 7 overs. And over they were looking for a kind of a comeback. 60 पे 3 7 ओवर की गेंदबाजी और 13 ओवर अभी भी शेष हैं. तजमुल बाबा 9 एक छक्का पिछले ओवर में बहुत बढ़िया. और उसके बाद आसिफ रसूल ने भी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पे, हालांकि तजमुल बाबा ने लॉन्ग ऑन पे तो बहुत बेहतर बल्लेबाजी देखने को मिली थी. संगोत्रा की अगर हम बात करें 2 ओवर 17 रन 2 विकेट. 60 पे 3 7 के बाद 8.57 प्रति ओवर के हिसाब से. और ये 2 बल्लेबाज जो हैं सेट होना ज़रूरी है, पार्टनरशिप निभाना ज़रूरी है सुल्तान के लिए, क्योंकि जितना वो बेहतर बल्लेबाजी कर पाएंगे उतना बेहतर स्थिति में पहुंचा पाएंगे सुल्तान की टीम को. और वो चाहेगी सुल्तान की टीम कि ये 2 बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन करें. विकेट की अगर हम बात करें, बेहतर विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों की बात करें 200 से अधिकतम रन बने हैं. अलग बात है कि दूसरी पारी में आप 50 70 80 130 से बना पाए, पर बेहतरीन और शानदार रन बने हैं इस विकेट पे. आसिफ रसूल 10 पे, तजमुल बाबा 9 पे. 2 महान बल्लेबाज, 2 अनुभवी खिलाड़ी इस समय. और संभव प्रयास होगा सुल्तान को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाने का, एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने का नाइस जेम्स के विरुद्ध. फिलहाल एलए का दूसरा ओवर, पहले ओवर में 15 खर्चीले साबित हुए. दूसरे ओवर की वो गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे की. पारी का 8वां ओवर, पहली गेंद. अच्छा शॉट सामने की ओर, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को. 1 रन और खाते हुए 11 पे आसिफ रसूल 10 गेंदों से. 9 पे अब सामने तजमुल बाबा 61 पे 3. और ये देख लीजिए डग आउट और दर्शक अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को. सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बनाम नाइस जेम्स क्रिकेट क्लब. दूसरा मुकाबला नाइस जेम्स का, पहला मुकाबला सुल्तान का. और बिग JKPL का छठा मुकाबला. 61 पे 3 7.1. खूबसूरत और शानदार विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल. तेज गेंदबाज एलए.
इस बार खिलाड़ी तैनात जब तक भी आकर के गेंद को फील्ड करते बड़े क्षेत्र से दोनों बल्लेबाजों ने वो प्रयास नहीं किया रन लेने का, क्योंकि जानते हैं अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता है नहीं, ज़रूरत है नहीं। अब 3 विकेट शुरुआत में गंवा चुके हैं, यहाँ से विकेट खोना नहीं चाहेगी सुल्तान की टीम और नाइस गेम चाहेगी कि एक और विकेट जल्द से जल्द प्राप्त किया जाए। चौथा विकेट उनको मिल जाए तो फिर और बेहतर दबाव बनाने में सफल हो जाएंगे टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला पे। तजमुल बाबा और आसिफ रसूल, हालांकि ज़हूर जोलो अभी टीम का हिस्सा है, नासिर गनई आपके पास है, आजिम राथर आपके पास है, तो कुछ बेहतर बल्लेबाजी अभी भी आपके पास है अगर बात करें सुल्तान की। ऑफ स्टंप से बाहर खेला जरूर, हवा में गेंद और सीधे खिलाड़ी के पास। हम बात कर रहे थे कि विकेट यहाँ पे तलाशेंगे और वो विकेट मिलता हुआ तो तजमुल बाबा का 9 बनाए 8 गेंदों का सामना किया, 61 पे चौथा गंवाया 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने। Only 6 for Tajimal Baba today, and he's on his way back to pavilion. An innings where he saw a 6 that he is known for, and he's on his way back to pavilion. And Sultan Warriors are 4 down. Another big man departs. There are plenty of big names in the lineup. One of them is Tajimal Baba. He's on his way. LA finds his man. LA really contain it. He draws a kind of LA. We can call it LAC, line of actual control. He drawn that pattern and that line in getting rid of Tajimal Baba. That's the wicket number 4 down here. And people are watching the game of cricket. There is Lon Sumaya and others watching the game of cricket and enjoying the show here at Jammu University. Well, a couple of people, a lot of spectators here, and look at this lad. He's pretty concerned, and this is the dugout of Sultan Warriors. Concerned faces, a kind of a despair over there. Couples are coming here, and he's waving hand, thanking the camera person there. And this is the guest gallery area. We have some of the big names in that guest gallery area today. And there it is, the small kid. Well, lovely face on your screen right now. And it's a delight for father. And he's delighted that his son is displayed on the big screen. Driven back to the bowler. Zahur Zolo comes out to bat at number 6. Sultans, nothing wrong with the scorecard. They are 61. But they're losing wickets at regular intervals. We saw kind of a move on, and in the meantime we saw the back of 4th one there, and when we saw that little partnership building and getting better with the passage of time, we saw the back of another one. So that is the problem with the Sultans. They're unable to resist, and they got to make things happen here and need a partnership of 40-50 that will surely help their side to go past 100 mark first. That's going to be in the mind at the moment. We are into the 8th over and 62 for the loss of 4. The future partnership, we saw that against the likes of Sahil Sangotra, gone for 16. When you put your heads down, stitch a stand, share a partnership, and you can easily take care of the rest. We saw that in that over, but all of a sudden Tajimal Baba, in search of bigger boundaries, he perished to that nothing shot. The second one today, I'm going to call it nothing short. One that was Arjun Singh. The next one from Tajimal Baba. Runs were coming. 1s and 2s. This is how you're going to build an innings and knock. You have to draw that pattern. You can't find 6 on each and every ball. So you have to work hard for it. You have to earn it. 63 for 4 off traders. We're going to be over number 9. Please come in, Sheikh Nazir. 8 समाप्त 63 पे 4 सुल्तान वॉरियर्स दबाव में। तो संकट की स्थिति इस समय सुल्तान की टीम पे, क्योंकि 4 विकेट आपने गंवाए हैं। आसिम बशीर, वसीम काचूर, अर्जुन सिंह और तजमुल बाबा आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। इस समय देखा जाए तो ज़हूर जोलो 1 पे और आसिफ रसूल एक बेहतरीन खिलाड़ी। 11 गेंदों से 12 पे नाबाद 2 से 1 रन बनाया है आसिफ रसूल ने। 8 में 63 बने हैं। 4 विकेट पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के। लवप्रीत कंबोज 2 ओवर 11 रन 1 विकेट।
क्या दूसरे स्पेल में लेकर के आए हैं। उन्होंने शुरुआत की थी और शुरुआत में ही आसिम बशीर को चलता गया था। एंजॉय कर रहे हैं दर्शक भी और कुछ युवा क्रिकेटर्स भी नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। क्रिकेट हर्षो, हालांकि कश्मीर क्षेत्र की अगर हम बात करें काफ़ी कड़ाके की ठंड है और ऐसे में वहाँ पे क्रिकेट खेलना संभव नहीं है इस मौसम में। पर जम्मू की अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र में आपको क्रिकेट दिखाई देगा। 63 पे 4 8 के बाद 9 की शुरुआत। आसिफ रसूल और जहूर जोलो नाबाद जोड़ी। लवप्रीत कंबोज नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। गेंद बेहतर बाहरी किनारा, वहां सीधे विकेट कीपर के पास। आसिफ रसूल 12 पे चले गए हैं, 12 गेंदों का सामना किया। 9वें की शुरुआत लवप्रीत को लेकर के आए। विकेट के साथ उनकी बहुत बढ़िया कहानी वो प्रीत निभाई है उन्होंने। एक और विकेट यहां तलाशा है। 63 पे 5। 63 for 5 of their team back to hut, and it's just like that, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं. It was just like that. All of a sudden, ball was moving a little bit outwards. He shown some reluctance. In the end, he guided it, and it kissed to the bat on way to wicketkeeper. He makes no mistake. Easy one, easiest of the chances for wicketkeeper. That brings new man in at number 7 is going to be Zaidar from Budgam. Comes out to bat. Zaidar, the man can bail them out here. They need someone to stand tall to the occasion. And let's see what Zaidar is going to do with the bat. Sultan's in a spot of border in shallow waters, and their boat is sinking at the moment. It will be early to say that this is going to sink further, because they do have some of the big names left in the kitty, in the dugout, but looks like, oh, this is the man behind Big FM here in this part of the world. Dun badal ke to dekho. Well, Asif Rasul was just trying to dun badal ke to dekho. In that process, he lost his wicket while trying to guide it away. And here is the new man in. That is तार छेड़ी गेंदबाज ने थी और उस तार पे धुन छेड़ना चाहते थे और उसमें पकड़े गए आसिफ रसूल, अपना विकेट गवा बैठे। जाहिद डार आए नए बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर है, बेहतरीन बल्लेबाज है और जहूर जोलो भी एक क्षमता वाले खिलाड़ी हैं। और यहाँ से आपके पास समय, हालांकि ओवर्स की अगर हम बात करें, ओवर्स आपके पास काफ़ी पड़े हैं। इसके बाद हम जिक्र करें तो 11 ओवर का खेल शेष है और 5 विकेट अभी भी हाथ में, क्योंकि नासिर गनई आने वाले बल्लेबाजों में आजिम राथर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। विकल्प आपके पास है, पर यहाँ एक बड़ी साझेदारी और यहाँ से ये 17 14 15 ओवर तक दोनों बल्लेबाज बेहतर तरीके से ले जाते हैं, विदाउट विकेट ले जाते हैं। तो मैं समझता हूं अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप 150 160 तक पहुंच सकते हैं। I sure really agree with your statement, and surely they're going to finish at a 180, 170, 180, 190. That isn't a big thing. You have all the time in the world left, but the concern is you don't have too many wickets. You're already 5 down, hop their team back to hot. Zaidar is in there for a while, in the air. And just short of man over there. Zaidar while trying to close the bat face, and he survives. He's lucky that he's breathing again in the middle. Zaidar and Zolo in the middle. Look at that turn, full of twist. But today the fielders are getting better. Yesterday they dropped a couple of chances. Assalamu alaikum. Thank you very much, brothers coming from Rajouri, and shaking hands here in the comm box. It's a big thing for us, and they're adding a kind of fuel. And Rajouri is another beautiful part of Jammu and Kashmir. Well, thanks to the chief scorer of the tournament, Mr. Shahnawaz Wani. 9 gone. It's 5 down, 66 on the board. Sultan Warriors in real trouble here, believe me. 11 ओवर का खेल बचा है। 66 पे 5, 9 ओवर में जोलो 2, जायदार 1। आने वाले बल्लेबाजों में नासिर गनई और उनके पास की अगर हम बात करें तो एक और खिलाड़ी यानी कि आजिम राथर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। पर यहाँ पे लवप्रीत कंबोज की बात करें, 3 ओवर 13 रन 2 विकेट, कमाल की गेंदबाजी की है। 1 ओवर उनका भी शेष है। 7.33 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है टीम। 11 ओवर का खेल हम बात कर रहे थे कि अगर पूरे 20 ओवर खेल पाती है टीम तो फिर आप जाकर के 153 155 तक पहुंच पाएंगे और सुल्तान का प्रयास होना चाहिए कि आप 150 160 तक पहुंचे। Who knows, they can go past 153, believe me. If they bat all the 20 overs, they can still think of 160, 170. They can scale that. But the question is, they need a partnership here. They need to recover and repair the damage, which is earlier on done. You know, you're 5 down, and that is going to be the concern.
Thank you very much, Naveen Saini. And back to the business part of the game. They are 5 down, help their team back to heart. Now they need a partnership here at the moment to recover and to overcome early dent. Look, they're 5 down, help their team back to heart. Zaidar and Zolo, the two experienced lads in the middle. I believe these two can really crack it. The barrier that bowlers are creating at the moment, they're putting them against the wall, but these two can really stand tall and pave a way for Sultans to go through this tough phase and look for a big score. चौहत्तर पे 5, 9.4 ओवर की You see, you गेंदबाजी. rightly mentioned that it's the high time. Exert more amount of pressure. It's the high time to crack it here. 74 for 5. It's the right time. Exert more amount of pressure and make the batters fall to their shots. And when you drive boundaries and singles, batters gonna try something new and something extraordinary. In that process, you can see one more wicket here. And if they lose one more here at this very crucial juncture, I don't think it's going to be easy to recover. If they one more down here, Zolo and Zaid, they're going to play the pivotal part. If they're able to get rid of this pair, they're very much on top. जी बिल्कुल, क्योंकि 9.5 ओवर में 75 5 विकेट, तो अगर यहाँ से विकेट आ जाता है तो फिर दबाव आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर हम बात करें विकेट आपके पास हैं, बल्लेबाज आपके पास हैं, पर दबाव की स्थिति आ जाएगी और वहाँ से आप आसानी के साथ वो बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम नहीं हो जाएंगे। और ये चीज़ जहन में रखनी होगी सुल्तान के बल्लेबाजों को, क्योंकि विकेट की अगर हम बात करें, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट करना, परिस्थितियों में अपने आप को डालना और फिर वहां बल्लेबाजी करना। महानता बल्लेबाज की है कि आप बेहतर बल्लेबाजी करें, आप परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी करें। अब 10 ओवर की गेंदबाजी में 76 रन 7.60 प्रति ओवर के हिसाब से बना लिया है। अगर देखा जाए तो 5 विकेट अभी भी हाथ में है, 152 तक टीम पहुंच सकती है। फिलहाल 10 समाप्त 76 5 विकेट के नुकसान पे जायदार 3 पे 5 गेंदों से, और जोहर जोलो ने अभी तक 10 रन बनाए हैं, 8 गेंदों ने सामना किया है। Nazir, thanks to the beloved listeners and viewers, they're always there backing us from different areas of the valley, and Rashid Mama joining us from Kishtwar, the beautiful valley, the land of sapphire and saffron, and we shall be back inshallah next season. Well, till then, Mama, wait for us and we're gonna come your way again to the shores, to the lovely scenes of Kishtwar next season, which promises to be another great experience, which promises to be another humdinger of a tournament and contest. 76 for 5 after 10.
halfway mark, halfway stage. We 10 to go. Thanks to the chief scorer of the tournament, Mr. Shahnawaz Wani. Sultan Warriors need a partnership to overcome and to make a comeback here. On the other side, NGCC, they're very much on top. They need to keep going and keep pushing and keep knocking. It's the high time. Exert little amount of pressure here. Just crack one more here. You're very much on top. Thank you very much. All the beloved listeners and viewers from Kashmir Valley and from different parts of Jammu and Kashmir. 76 for 5 after 10 overs. And there it is, the tricolour waving at the moment. It took a lot of sacrifices as a community, as a country. All fought for this. And that's why it's waving today. It took sweat, it took blood, it took hard-earned work, and in a day in, day out. That's the reason it's flying and waving at the moment. So all given their spirit and blood. Here we are. It's 76 for 5 to 10. We're going to be in over number 11. Sultan Warriors. Real test for the middle order. As number 6 and number 7 in the middle, even we can see that middle order, they were able to crack that barrier. They cracked that middle. It shown its fragility today. The middle order from Sultan Warriors. Oh, sorry to say, and handshake will also take place. The message of the league is say bye-bye to drugs, say yes to healthy life, and say yes to cricket.
Thank you, sir. We really appreciate your presence here. Thank you for gracing the occasion and trying some luck with the bat. 76 for 5 after 10 overs. It's game time in the middle. Play is about to resume. We hope Randawaji is going to team up with big JKPL in longevity and long run. Thanks to the chief organizer Maruf Saab, his presence here. And the team from big JKPL, Dun Badal Ki to dekho. It's changing air and atmosphere here at the center. दस ओवर की समाप्ति 76 पे 5 सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ज़हूर जोलो 10 पे जाहिदार 3 पे 5 के 2 से और ऐसे में 2 ओवर 18 रन 1 विकेट एलए की गेंदबाजी विश्लेषण और ऐसे में देखा जाए तो नेवर की शुरुआत होने जा रही है 11वें की शुरुआत पारी का ये 11वां ओवर प्रोजेक्टेड स्कोर 152 जोलो 10 जाहिदार 3 5 के 2 से और देखा जाए यहां से किस प्रकार का प्रदर्शन रहने वाला है क्योंकि एक अच्छी शुरुआत एक बेहतर शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत में मिला नहीं उस प्रकार का स्टार्ट मिला नहीं सुल्तान को जिस प्रकार के लिए उनके बल्लेबाज जाने जाते हैं आक्रमण शैली से खेलना पसंद करते हैं पर एलए का इस्तेमाल इस समय अच्छी गेंद है ओवर की शुरुआत होती हुई यहाँ जोलो और जाहिर डार को बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी रिस्क नहीं उठाना होगा क्योंकि आपको बेहतर प्रदर्शन करना है तो फिर एक साझेदारी में अपना बल देना जरूरी वो साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है जितना आप बेहतर सहयोग दे पाएंगे अपनी टीम को उतना बेहतर कहा जा सकता है जोलो 10 पे जाहिर डार 3 पर एनजीसीसी की अगर बात करें प्रशंसा कर रही होगी फील्डर्स की कप्तान की गेंदबाजों की जिस प्रकार से आज एक बेहतर और शानदार क्रिकेट उन्होंने खेला है सुल्तान के सामने वो बहुत बढ़िया फिलहाल 76 पे 5 10 के बाद 11वें की शुरुआत हो चुकी है अच्छी गेंद थी बेहतर गेंद ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण और ऑफ साइड की बात करें हालांकि स्लिप तो है नहीं स्लिप को हटा लिया गया है पर विकेट कीपर की अगर हम बात करें काफ़ी दूर है स्टंप से ये देखते हैं कि गति के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गेंदों में एलए और जिस रफ्तार के साथ वो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर अपनी ऊर्जा का संचार कर रहे हैं पूरी गति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो ऐसे में विकेट कीपर काफ़ी दूर है उसके अलावा शॉर्ट थर्ड बैंड पे भी एक खिलाड़ी है हर कवर पे एक खिलाड़ी है हालांकि बैकवर्ड पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी अगली गेंद लेकर के तैयार इस बार अच्छी गेंद थी बेहतर गेंद खूबसूरत गेंद ज़हूर जोलो के लिए सीधे से ठीक लेंथ पे गेंदबाजी होती हुई लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी और इस ओवर में 3 डॉट गेंदें लगातार दबाव जरूर ज़हूर जोलो पे पर यहाँ से सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी अब गैप में गेंद को धकेलिए सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कीजिए कि रोटेशन से आप मानसिक तौर पे और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो इस चीज़ की कमी जरूर दिखी है यहाँ पे क्योंकि अगर आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे तो फिर मुश्किल आपके लिए और आपकी टीम के लिए 10.3 के बाद 76 पे 5 जोलो 10 पे सामने एलए इस ओवर में अगली बार यहाँ एक सिंगल मिल जाएगा क्योंकि ऑन साइड में खेलकर तेजी के साथ दौड़ पड़े एक सिंगल के लिए और केवल 1 रन ही होकर उस और खिलाड़ी तैनात है सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ 77 5 विकेट पे 10.4 और जाहिर डार अब सामने पहली बारी छठा मुकाबला बिग JKPL का कल 2 और मुकाबले लेकर के 10 बजे से आपकी सेवा में उपस्थित रहेगी JK स्पोर्ट्स ऐप ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से और उसके अलावा लाइव स्पोर्ट्स टीवी JK स्पोर्ट्स प्रायोजक शाइनिंग स्टार जस्ट बुखारा हमदान हुरिकेन्स HND और वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब धन्यवाद स्पॉन्सर्स का अपने व्यूवर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए यहाँ पे 1 रन तेजी के साथ दूसरे के प्ले पलटे जरूर हैं पर वापस जाना पड़ेगा देखिए ये चीजें बहुत कम आपके पास गुंजाइश रहती है गलती की आप 1 को 2 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पर सामने फील्डर तैनात हैं गेंद उनके हाथ में है तो फिर कहाँ दौड़ रहे हैं आप गेंद पे नजरें रखनी जरूरी है सुल्तान की टीम की अगर हम बात करें 78 पे 5 साझेदारी को बड़ा करना जरूरी है आपके पास ओवर्स काफी पड़े हैं क्योंकि इसके बाद 9 ओवर आने और मात्र 2 रन आए इस ओवर में सिंगल डबल पे अंकुश जरूर लगा है इस ओवर में एलए द्वारा ये उनका 30 ओवर है मात्र 20 रन देकर के 1 विकेट अगली गेंद
ऑफ साइड में फील्डर के पास रन दौड़ करके पूरा तो कर लिया। ओवर चाहे 3 ओवर की हो गई समाप्ति। 11 समाप्त 79 पे 5। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, जाहिदार 4, ज़ुहुर ज़ोलो 12। 144 प्रोजेक्टेड स्कोर इस समय, जो करंट रन रेट है उस रन गति के मुताबिक अगर देखा जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड, बिग JKPL छठा मुकाबला, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का मुकाबला नाइस जेम्स क्रिकेट क्लब के साथ। और नाइस जेम्स का ये दूसरा मुकाबला, पिछले भी हार का सामना करना पड़ा था। सुल्तान का ये पहला मुकाबला है और यहाँ जीत अर्जित करनी जरूरी, जीत के साथ शुरुआत करनी जरूरी इस प्रतियोगिता में। पर क्या परिणाम आएगा, कहां तक पहुंच पाएगी टीम। 9 ओवर का खेल अभी भी शेष। 11 में 79, 5 विकेट पे। ज़ुहुर ज़ोलो में वो क्षमता है, साथ में जाहिदार एक बेहतरीन और दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, पर उस अनुभव का इस्तेमाल इन परिस्थितियों में करना जरूरी। वो आपकी मानसिकता, वो आपकी क्षमता, वो आपकी स्ट्रेंथ यहाँ काम आएगी टीम के लिए। तो मैं समझता हूँ आप महान बल्लेबाज हैं। और फिर दूसरी छोर से गेंदबाजों की बात करें, गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, पर यहाँ पे विकेट लगातार अंतराल पे चटकाने जरूरी है, तभी जाकर के आप कम से कम लक्ष्य तक रोक पाते हैं, कम से कम लक्ष्य तक रोक पाएंगे टीम को। 79 पे 5। नेवर की शुरुआत, लेग स्टंप की शेप में पुल किया खूबसूरती के साथ, एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े, पलटकर दूसरे रन के लिए जाएंगे। थ्रो आया जरूर, पर दूसरा रन भी पूरा कर लिया तेजी के साथ। तालमेल का बेहतर परिचय थोड़ो बल्लेबाजों ने, और 2 रन और जोड़ लिए। 79 से बढ़कर 81, 12वें की शुरुआत। नवीद का इस्तेमाल गेंदबाजी में 1.1 ओवर, उनका दूसरा ओवर 10 पिछले ओवर में आए थे। यहाँ 2 रन पहली गेंद पर। जोलो 14 पे, सामने 81 पे 5, 12वां ओवर। पहली पारी इस समय चल रही है इस मुकाबले की, छठा मुकाबला। देखिए ये अच्छी रणनीति है, आप गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करें। अंतिम समय तक देखा जा रहा है गेंद को हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में गेंद को डिफ्लेक्ट किया, 1 रन के लिए दौड़ पड़े, पलटकर दूसरे रन के लिए, और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो ये रणनीति बेहतर है, जो हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे थे कि सिंगल को डबल में बटोरना, और वो स्थिति काफी जरूर रहेगी। जब उस प्रकार की आप बल्लेबाजी कर पाएंगे, आप उस प्रकार से तालमेल बेहतर बैठा पाएंगे, तो फिर आप विपक्ष पे दबाव बना सकते हैं। जोलो 16, 83 पे 5, 11.2 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद, पिछली गेंद पर वो अंतिम गेंद पर चौका आया था, पर यहां विकेट कीपर बहुत बढ़िया गैदरिंग, कमाल की फील्डिंग कहना चाहिए, क्योंकि गेंद उनसे छिटकती तो संभवतः चौका मिल सकता था। रोकने में सफल, रन संख्या में वृद्धि हुई नहीं। 11.3, 83 पे 5, 3 गेंदें शेष इस ओवर की। जोलो 16 पे, जाहिदार 4 पे, 6 गेंदों से, और अभी भी 3 गेंदें बची है इस ओवर में। उसके बाद फिर 8 ओवर। प्रयास बेहतर करना जरूरी है, रन गति को बढ़ाना जरूरी है, पार्टनरशिप निभाना जरूरी है। फिलहाल सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए अगली गेंद देकर के बायां की गेंदबाज, खूबसूरत, शानदार, बेहतरीन, पर फील्डर वहां पे तैनात लॉन्ग ऑफ पे। गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, फिर सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। जाहिदार अब सामने हो गए, 4 पे 17 पे पहुंच चुके हैं जोलो। 84 पे 5 ओवर में 2 बार 2-2 और उसके बाद एक सिंगल, तो कुल मिलाकर 5 रन आ चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी शेष है, तो बेहतर तरीके से आप यहाँ 14-15 ओवर तक ले जाइए। उसके बाद जब आपके पास विकेट हाथ में सुरक्षित है, फिर आप अटैकिंग क्रिकेट, अंतिम ओवर में आप गियर बदल करके अगर आखिरी 4-5 ओवर में आप 40-50 रन और जोड़ लें, तो 150-160 तक अवश्य आप पहुंच सकते हैं। 2 गेंदें बची ओवर की। 84 सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, जाहिदार 4 और नाइस जेम्स का प्रयास कम से कम लक्ष्य तक रोकना, विकेट प्राप्त करने जरूरी। धार के लिए अच्छी गेंद थी, पर उसको समझ नहीं पाए ठीक तरीके से, बल्ले पे आ नहीं पाई गेंद। एक और डॉट गेंद, अंतिम गेंद का आना बाकी। 12वां ओवर, 11.5, 7.10 प्रति ओवर के हिसाब से आप 142 तक पहुंच सकते हैं, जो प्रोजेक्टेड स्कोर इस समय करंट रन रेट के मुताबिक दिखाया जा रहा है स्कोर बोर्ड पे। 84 पे 5, जाहिदार 4 पे, ज़ुहुर ज़ोलो ने 17 बनाए हैं। नवीद का ये दूसरा ओवर है, 15 रन अभी तक 1.5 में, और विकेटलेस अभी तक उनका ये स्पेल रहा है। पहले स्पेल में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 ओवर इससे पूर्व। दूसरे ओवर की इस गेंदबाजी में अब तक उन्होंने इस ओवर में 5 रन खर्चे। आखिरी गेंद ऑन साइड में मोड़ा, 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। अंतिम गेंद पर रन आएगा, ओवर की हो गई समाप्ति। 12 समाप्त, 85 पे 5, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। Have their team back to hut. 8 overs to go. Current rate is 7.08 and over. If they carry on with the same pace, you've got to carry on at least 7 and over. Will surely help them to some extent. 7 of 8 overs will make it around 56-60 plus. Will give them something to cheer and their bowlers to bowl at. Zolo
and Zaidar in the middle. Zolo 17 of 17 run a ball with a strike rate of 100. And Zaid is playing with a strike rate below 100 at the moment. He's on 5 of 8. Zaid is just trying to play that second fiddle as Zolo is playing run a ball game here. Zaid also need to play that run a ball to improve, and well, playing like this below 100 the strike rate, that's going to be concern for rest of the pack. Stand stall and keeps it away for a quick single. One more run added. 86 for 5. We're into the over number 13. Some of the big names gracing the cage, and time and again. Yesterday we saw that IPS officer here, Shiv Kumarji, today MLA, graced the occasion, interacted with the players, and he was appreciated too from big JKPL organizing committee. 5 down, 86 on the board. We're into the over number 13. That's a big shot coming. There is a man. Will it carry? He does well. He takes that one. The young army for nice gems are doing wonders on the field. Zolo can't believe. But you got to believe and you got to go. Wicket number 6 down. He was just trying to break free. In that process, he's caught at wide long off. Oh, look at that one. Brilliant take. Nice curble. Even I was looking for a cover here in the com box, but he took that one. Brilliant catch. And Zolo is gone. He's a goner here, and Sultans are in further trouble. There are some of the big names in the lineup. Nasir Bali is still waiting for his turn. He has to turn the tide Sultan Warriors way if Sultans are to set a good score for nice gems. And new man comes out to bat is Umas Itu. Umas, another good finding of Sultan Warriors. And one can rely, captain is going to believe in Umas Itu. The class he possesses, the stature he has, he's of highest stature, and he need to bat like that here today. They are 6 down with 86 on the board. Halfway stage in the 13th over. And Umas Itu has to do something special now as they are in a spot of border. In a real tight situation. As they lost 6 of the batters. Down to number 7 and number 8. Zaidar and Umas Itu. Left with no other choice. Need to fight it out. Need to sweat it out. 6th one down. What he's doing here, that is surprising. It's the 3rd ball down in the 13th over. Hits him high on the pad. Nearly threw him on that occasion. LA is bowling really well. He has picked up 2 and gone for just 22. We're into the 4th over. Well, it is astonishing when someone comes across. Well, cricket can't take place back home nowadays. So whatever you get outside, you have to contend with that. Can't understand why they're passing. Look at the attendance here. Good attendance again. Thank you very much. It's 86 for 6. We are in over number 13 as we watch LA again. Hits him on the pad, and Umas is yet to find that middle of the blade. He's yet to lay bat onto the leather. The willow onto the leather. Bat onto the ball. 87 for 6. This is inning number 1, match number 6. Look, people enjoying the game of cricket, coming in good numbers, analyzing the game beyond the boundary line, beyond the boundary cushion. And cameraman is capturing each and every moment. So nobody is going to hide today. And how come you hide? We have 8 cameras in place. Using that Hawkeye, Eagle Eye stance to find out everyone here. Clipped away, square on the on. Now they're going to push for 2 here. You can't take risk here. Just a single. That's all he's going to get. 88 for 6 after 13 overs. It started.
It started on a bang. It started on a terrific note. Now they're enjoying and experiencing that down under. Not just enjoying, but it is a situation, we call it a pressure cooker like situation. Volleyball is going on that portion. And this is the positive sign that games are going on. The younger generation is engaging themselves with different sport, and be it volleyball, be it cricket, hockey, which is the national game of country. So that's the good move. At least they're doing something, and keep doing. Don't stay idle. Idle man's mind is a devil's workshop. There he's a worker. He's earning it through hard work. And you got to work hard. That's what life teaches us. It teaches us a lesson. 88 for 6 after 13 overs. 7 overs are going to come. 42 balls are going to come. 7 overs remaining. But Sultan Warriors, they need a partnership again. Once again, we're going to talk about that partnership. They need that. Is it in the gap? It was in the gap, but look at the fielder. Where there was an opportunity of a second, he denied that. That's called the spirit. They brought in that fighting spirit and are denying the batters that second run. This is good cricket. And talking about that competition, it is of highest level at the moment. Stiff competition going on between bat and ball. And credit to the fielding unit. The way they are backing the bowlers. Denied the second run. Even that was on. That was pretty on. And was denied in the end. 89 for 6. We're into the 14th over of the game. Naveed again. He has to reload again. He's gonna go back to the top of his bowling mark again. Need to reload. Coming in good numbers. Watching the game of cricket. And that's the beauty of cricket nowadays. People are earning something from it. Street vendors are coming in good numbers. They're getting benefited. And that Pompo boy back home is also earning livelihood for his family. Next one clipped away. Good looking shot. And cricket isn't about just win and loss now. Winning and losing. It's now an industry. And which is spreading its wings day by day. It's now blessing in disguise. Beneficial for many walks of life. Commentators coming in. Camera persons coming in. Umpires getting benefited. Players getting their money, and everyone is getting benefit. 90 for 6 after 13.2. We're in over number 14. Naveed in his third over. None for 18. Here he is again. Soft hand. Score is for 2. Won't get the second one. It is going to be a risky move. And he decided against that. 91 for 6. 3 singles coming on. 3 successive balls for Zaid and Umair Situ in the middle. And Sultan Warriors are feeling that heat at the moment. It's pressure cooker like situation in the middle. And Sultans need to absorb that pressure to stand tall here. He's watching the game behind that kind of that wall or the barricade. Worked away nicely, wide of the man. And he covered all the ground. But can't prevent that second run. He got to push hard. Convert ones into twos. You need that at the moment. You're left with no other choice. 93 for 6. As we are into the 14th over of the game. I still believe they got 10 and over from this ball till the very last moment. Sultans can still find 160. Which is going to be a competitive total. But talking about the dimensions, no score is safe. In talking about the previous experience we have had about this venue, chase gets tough here and difficult. 93 for 6. 2 balls remaining in over number 14. Naveed in his third, he's got 1 more over left in his quota. Watching the game of cricket. Concerned faces. Looking forward to this big game. It's a must win for Gems. And Sultans would also love to start on a good note, on a positive note.
6 down, 93 on the board. They saw 5 runs coming of 4 balls. As we watch Naveed again. Bang it in short, and that is a mess for you. Stand and deliver. Punched it down the ground. I call it gun barrel straight. The way he stood tall, and that just took out a 6 takes Sultanas to 99. Much needed 6. Makes that 11 of 5. But what a shot on that occasion. That's a mess for you. Stand and deliver. Look at that again. Oh, rising on the rise around the rib cage, but he's there to dispatch it. 99, one ship team 100. The last ball of Naveed's over. That will bring up the 100 for Sultans, and he can keep the strike. He's going to retain the strike for the next over. 14 gone. It's 100 for 6. 14 समाप्त, 100 रन पूरे हो चुके हैं 14 ओवर में, 6 विकेट गंवाए। जाहिदार 9 पे, उमेश इत्तू 10 पे 6 गेंदों से। आखिरी 6 ओवर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 60 तो 160, और 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो फिर 54 और 150 तक पहुंच पाएगी टीम। वो प्रयास जरूर होगा यहाँ पे, क्योंकि 7.14 प्रति ओवर के हिसाब से आप रन बना रहे हैं। जरूरी भी है कि सुल्तान की टीम चाहेगी 150-160 तक पहुंचे सफलतापूर्वक, और क्या वहां तक पहुंच पाएगी ये देखने वाली बात होगी। ये खूबसूरत दृश्य ये देख लीजिए, एक छोटे बालक अपने माता पिता के साथ, निश्चित तौर पे दृश्य देखना। अगर आप कुछ समय पहले जिक्र कर रहे थे कि क्रिकेट अब क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें अब इन्वॉल्व हो गई। और चाहे आप क्रिकेटर्स की बात करें, चाहे आप बाकी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, या बाकी लोग जितने भी इसके साथ जुड़े हैं, कमेंटेटर्स, अंपायर्स, मैच ऑफिशियल्स, ग्राउंड स्टाफ, बाकी लोग, तो मैं समझता हूँ एक And this is our count box on your screen right now. जी बिल्कुल, और धन्यवाद करना चाहेंगे सैनी भाई का, और जो हमें भी स्क्रीन पे लेकर के आते हैं। और बात कर रहा था कि क्रिकेट ने अब सभी को अपनी उस चपेट में ले लिया, और मैं समझता हूँ एक अच्छा मूव है, क्योंकि क्रिकेट के साथ जुड़े रहना और जितने भी हमारी सोसाइटी में वो इवल्स है उनसे दूर रखने का ये सीधा प्रयास है। फिर ये उमेश सिद्धू के बल्ले का सीधा प्रयास है, और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा लगी है। जस्ट बोखारा छक्का, उमेश के बल्ले से निकलने वाला ये खूबसूरत स्ट्रोक। स्वागत किया लवप्रीत का पहली गेंद पर। और उमेश की अगर हम बात करें, इस प्रकार के स्ट्रोक उनके बल्ले से आमतौर पर देखे जा सकते हैं जब उनकी रेंज पे आप गेंदबाजी करेंगे। कमाल का ये स्ट्रोक था, बहुत बेहतर सामने की ओर। 6 रन अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए इस छक्के के साथ। जस्ट बुखारा छक्का, 106 पे 6। इस बार अंदरूनी भाग्य ने साथ दिया, स्टंप से टकराती तो शायद काम तमाम हो जाता, पर सुरक्षित क्रीज में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 14.2, 106 पे 6। उमेश 16-8 के दूसरे 200 के स्ट्राइक रेट से। जाहिदार 9-12 गेंदें खेली है, और एक अच्छा मुकाबला। लवप्रीत कंबोज आखिरी ओवर 3.2 19 रन 2 विकेट, पर इस ओवर को बड़ा करना जरूरी है। एक बार फिर उसी क्षेत्र में, और गेंद एक बार फिर बॉर्डर लाइन से बाहर। एक और छक्का उमेश के बल्ले से, और ऊर्जा का संचार उस स्ट्रोक के पीछे। ताकत बहुत थी, ताकत और सही सटीक स्ट्रोक मारा था। 22 पर पहुंच गए 9 गेंदों से उमेश से, तो 112 पे 6, 14.3 ओवर की गेंदबाजी। उमेश का विकेट पे बने रहना काफी महत्वपूर्ण है सुल्तान के लिए, क्योंकि जितनी देर वो विकेट पे टिके रहेंगे उतना टीम जो है एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। अगली गेंद लवप्रीत की, एक बार फिर उड़ाया है, पंख दिए है, और ये तीसरा छक्का। 3 गेंदों से 3 छक्के। लवप्रीत इससे पहले बहुत बेहतर 3 ओवर किए थे, पर यहां कहानी बदलने वाली है। 3 छक्के आ चुके हैं 4 गेंदों में 18। ये देख लीजिए, ये उमेश है, और उमेश के बल्ले की दहार और खूबसूरत प्रहार बाउंड्री के पार ये छक्के देखने को मिले हैं। 118 पे 6, 14.4, 28 पे नाबाद है 10 गेंदों से। 161 प्रोजेक्टेड स्कोर। उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ इस समय वो बल्लेबाज उमेश सिद्धू द्वारा जो प्रहार किए जा रहे हैं। अभी भी 2 गेंदें, निश्चित तौर पे 2 बड़े के लिए जाएंगे। एक बड़ा लगाना जरूरी है यहाँ पे। उमेश चाहेंगे कि एक और बड़ा स्ट्रोक लिया जाए। लवप्रीत के विरुद्ध इस बार सम्मान दिया वापस बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। 18 आ चुके हैं 5 गेंदों से। अंतिम गेंद का बाकी। लवप्रीत कंबोज का ये आखिरी ओवर अपने कोटे का। 3.5 में 31 खर्चे हैं, 2 विकेट उनके नाम। 15वां ओवर 14.5, 118, 6 विकेट पे उमेश 28 पे 11 गेंदों से। एक बार फिर बिडॉफ है वहां पर तैनात। सिंगल लेने का अवसर था नहीं, ओवर की हो गई समाप्ति। 15 समाप्त। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 118 पे 6। Bigger with this, much needed one for SWB.
118 for 6 after 15 with 5 overs to go. 30 balls are gonna come. If they go 10 and over, gonna find themselves at 168 or 160, 170 will make it a good score for Sultan Warriors. Anything below that will surely give chasing side an opportunity. Look, the love for the game. Watching the game from that end, observing what's going on at the moment. Eco-friendly atmosphere here at Jammu University Playfield. JK Sports Time Facebook, moreover YouTube and Live Sports TV bringing you the live broadcast. Those who are new on JK Sports Time YouTube channel, you can subscribe to our channel and press the bell icon and be the part of JK Sports Time family. And we are also available in Play Store nowadays. Just go there and install the app and avail the benefits. You can watch all the live scoring updates coming from different parts of the globe. 118 for 6, done with 15. 5 overs are gonna come. 30 balls remaining. School going students here. And the new guideline is education and sport should go hand in hand. Talking about the Supreme Court of India. 118 for 6. And country is changing its taste. Now it's all about sport and sport here and there. Women's lifting title, men doing wonders, under 19 boys becoming a force to reckon. That's a quality shot. This is Adarsh for you. Flow with flourish. 1-2 for 6. This is over number 16 we are in. Sangotra taken on. Width again, not learning the lesson. And hit hard, smashed by Adarsh. He's so strong there. On to 13 of 14 balls. Left alone, it's a no ball. It's a no ball. Freight coming up. What you have done, Sangotra? I think it pitched outside the pitch. That is going to be the no ball. Freight for Adarsh. This time takes him on, but finds man in place. Will just be one. 124. Can't make good use of that. Can't blast it away. Finds the man at mid-wicket boundary. Only a single. 1-2-4 for 6. This is 16th over. Umesh 28. Zaid 14 of 16. Umesh used 12 balls for his 28. Batting with a strike rate of more than 200. And Zaid is still playing below on a ball. He's yet to attain that strike rate of 100. Here is Sangotra again. Umesh is clean bowled. Beauty of a delivery from Sagar Sangotra. Third one for Sagar, and this is the massive one. And it's the wicket of Umesh down the wrong line again. And he paid for it. That massive one. It's the huge success. Finally, he has the last laugh. There was turn an extra bounce. Little bit, but he played cross the line. And that cost him his wicket. On his way back to pavilion, Azim comes out to bat. Azim Rathar is going to take strike now. He's going to replace Umesh, who played 28 run cameo. Can't last long. Unable to bat through the innings. They needed him till the very last ball because Umesh is powerful lad. We saw a couple of big shots coming. Look at the students. They are delighted. University going students. Oh, flying kisses are going on at the moment. It's a new one. It isn't. It's Nasir Ganai. The first ball, not Azim. It's Nasir Bali. Well, he's very mature Bali. First ball and a big shot. Messu 6. The boy from Trikanjan rises to the occasion with a lusty blow. Take a look. Oh, it is a day sky.
Here is the ball number 2 for Nasir, and Nasir keeps it away. He's going to pick one. He will keep the strike. 16 done. 1-3-1 for 7. And Nasir on to 7. Sangotra is unhappy with himself, disgusted. Keep going, and Suwad is here. Coming from Pulwama. It's 1-3-1 for 7. Well, the young arm is delighted. Take a look again. They're enjoying their moments. They're thankful to the camera person for bringing them back onto the screen again and again. Now flying kisses are going on. But Nazir, that's the beauty of cricket. At least somebody is smiling because of we guys, because of cricket. And this is the natural therapy we need. And I think that's enough for today. That we brought something on their faces. मनोहर, आज के दौर की अगर हम बात करें, मैं समझता हूँ मात्र क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जिसने युवाओं के चेहरों पर वो मुस्कान लाई है. Cricket brings smile. We are the part of that. And I'm delighted here in the Combox, believe me. जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में मुन्ने बच्चे, हालांकि अगर कैमरे की आंख में कैद हो जाते तो वह समझता कि और बेहतर हो जाता. ये नन्हे मुन्ने चेहरे जो हैं वो भी उत्साहित हैं क्रिकेट के इस मैदान में आकर के. ये बड़ा स्ट्रोक है नासिर गनई के बल्ले से और काफी दूर जाएगी ये गेंद मैदान से बाहर. एक और जस मुखारा छक्का. ये क्षमता है इस खिलाड़ी की. दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ. 3 गेंदों से 13 पे नाबाद. रन संख्या की अगर हम बात करें 137, 7 विकेट के नुकसान पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला. That you call another day squire, and into the orbit, and Sannatul Islam, the young girl here, again in the same direction on the bounce, will carry to the field. Will just be one. He's loving that onside. Nasir Ganai. He's famously known as Nasir Bali. Valley is very much owned Bali. 1-3-8 for 7. We are into the 17th over. Nasir Ganai, terrific hitter. He's an all-rounder. He can bowl, he can bat. He's a gun fielder. He's a brilliant fielder too. But with the ball, his spell is going to be important today because his team need him badly with the ball too. You can't be 50-50. You got to be 100% with the ball. As we are in over number 17. 1-3-8 for 7. Zaidar. Akash Chaudhry. Call is for 2. Is he going to push? Zaid wanted second and he says, wait on. Second one is going to be risky move. There is no need to risk your wicket, as Nasir knows his capability. He knows if he bats till the very last moment. Believe me, Sultans can think of 170, 180 if he stays till the very last ball there. And if he stays, it's a check, mate. I believe that he's going to do that because he is a terrific batter. He can mirror the cricket ball, can make the ball swing and fly to all the parts of the ground, to every nook and corner. 1-3-9 for 7. On to 14 of just 4 balls. Wide up the up, well bowled. Good delivery from Akash Chaudhry. Akash is finding his rhythm back. He's gone for 8 in this over. Conceded 17 of his early 2. Back for the second spell. That too in the death phase. And here things can slip away. You need someone who's an expert to bowl the final overs, because these are called the finishing touches. As we watch Akash again, he's got a good run up, long run up. And Nasir with another lusty. Gone all the way for 6, flat 6. Just to book a maximum 145 for 7. Nasir Ganai is on to 20. And I can't understand which side Jan Saab is sporting. Oh, come on, that's the love for the game. I think he's sporting each and every side. That's the beauty of Jan Saab, and that makes him so special. And it's 145 for 7. He wanted to see cricket flourishing day by day. Oh, that was there to be hit. Nasir Ganai is a batter. He will love to see that line. Oh, he's surprised that he can't believe that. He missed an opportunity there. He would have wanted to see that one in that vicinity of point area, but can't time that one. It was asking to be hit. It was there to be hit, but he missed at that one. It was banged in short, no doubt about that. There was space behind the ball and the bounce, but you normally love that line. Even I saw Nazir hitting that line very well, but he can't hit that one. And I used to duck underneath whenever I saw that kind of a delivery. And there is that angel
little angel. Wow, lovely. Baby child on screen. Wow, so nice. Thank you, Naveen Saini and team. Bringing that child on screen. 145 is 7. Thanks to the JK Sports Time and Big JKPL. Showing our beloved listeners and viewers different angles, different faces, and people from different walks of life. From Jammu, from Kashmir, from Rajouri, Punch, from Samba, and from Kishtawar. From every nook and corner of Jammu and Kashmir. And it's 145 is 7. We are into the over number 18. Zaidar, man on strike. Sagar to finish his quota here. First ball, it's a dot delivery. Zaidar eyeing that slog sweep. It stays low. Unable to put that one away. Look, this is the love for the game. Smile is there. They're loving these moments. This time again, missed time is it? But he's going to pick one. That will bring Nasir on strike. That's what Sultans need at the moment. They need Nasir Ganai on strike. Batting on 20 of just 7 balls. What a cameo. Powering. And there is the volleyball going on. Keep going. It's 146 for 7. Over number 18. Sagar is in his 4th over. 3 wickets for Sagar today. Picked up all 3 lads, all the big names from Sultan's club. Nasir on strike. Nasir is going to throw his bat at everything. He's going to use his energy here. But this time can't time it properly. There is a message from Nasir towards dugout. He needs something. 147 for 7. Good over this from Sagar. So far, good, nice. And I can also call it a better one. So far. Does well. Chance of a run out. But he's safe, he's okay. 4 balls, 3 singles coming. How satisfied you are as a captain, how satisfied you are going to be with a bowler like young lad Sagar Sangotra. देखिए बहुत बेहतर गेंदबाजी उन्होंने की है। अगर संगोत्रा की बात करें इस परिस्थिति में, इन हालात में जब गेंदबाजी करते हैं आप 3.4 में 33 और 3 विकेट, वो भी सुल्तान के सामने, जहां कड़े प्रहार। शुरुआत में आपने थोड़ा सा असर जरूर डाला, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का प्रदर्शन मैं समझता हूं बहुत बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है इस टूर्नामेंट के इस मैच में। मात्र 3 सिंगल इस ओवर में, 2 गेंदें अभी भी शेष है। नासिर गनई सामने 21 पे 8 गेंदें खेली है और 20 से 17 जाहिर डार ने बनाए 148। चलिए गनई के बल्ले से एक और ठीक साइड स्क्रीन के ऊपर, और कैमरामैन बिल्कुल बाल बचे उनके दाईं ओर जा टकराई है गेंद स्टैंड पे। जस्ट बुखारा शॉट। Towel is not going to save. You need frame over there. Towel is not going to save. Take care of yours. And he's checking his camera over there. He's fine at the moment. He's got another camera to his right over there. It landed on that where he's doing his job, and that's a wide delivery. Fired that one wide of the up. We were just talking about his over. He has really done well after belted for 360 in his very first over. Made a good comeback. Yeah, he's gone for 40. But he's a young lad. That's another important aspect. As a young lad, you're bowling that 18th over of innings. A big name has failed to deliver at this crucial juncture, but he's doing really well. The last ball of his spell. Nasir makes that one fly again. There is a man, he's in play. No way, that's gone all the way. 6 more, and that 6 brought to you by Just Bukhara. A 6 to end the spell of Sagar Sangotra. And it takes Sultan Warriors to 161. And fitting reply from Nasir Ganai. It's 161 for 7 after 18 with 2 to go. Sultan still have an opportunity. Well begin his off turn once again. And talking about that exemplary work done by the top order. In 4 overs they were 41. They were going 10 and over. That's why well begin is half done. Look now, it's 161 after so many blows in the middle order. There's still 161. बहुत बेहतर बल्लेबाजी अंत में नासिर गनई और उमैस के भी वो तेज तरार कुछ रन जरूर, और उसके बाद जाहिर डार एक छोर से 20 गेंदों से 17 पर नासिर गनई ने 10 से 33 की जो आक्रामक पारी खेली है, आकर्षक पारी खेली है, तेज तरार विस्फोटक पारी खेली है। उसके चलते 161 विकेट पे 18 ओवर में नेवर की शुरुआत पारी का 19वां ओवर।
जाहिदार के लिए वाइड का इशारा, क्या आएगा अंपायर का? विकेट कीपर से भी गेंद चिटकी और पीछे बॉर्डर लाइन से बाहर, तो 5 वाइड जुड़ेंगे खाते में उपहार के रूप में। 5 और 166 पे 7। अभी भी 12 गेंदें शेष पहली पारी में। आकाश चौधरी का इस्तेमाल किया गया गेंदबाजी में। लेग स्टंप से बाहर दिशा और लंबाई पर नियंत्रण नहीं था। विकेट कीपर से भी चूक हुई और इस समय ये 5 वाइड्स मिलते हुए यहाँ टीम को। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की अगर हम बात करें 166 पे 7 18 ओवर में। आकाश का आखिरी ओवर होगा 3 ओवर 36 रन और अभी तक उन्हें कोई विकेट मिला नहीं है। आखिरी ओवर उनके कोटे का जो 4 ओवर का कोटा रहता है एक गेंदबाज का। जाहिदार 17 पे, सामने आकाश चौधरी इस बार ऑफ स्टंप पर खड़े खड़े अपनी जगह सीधे बल्ले से सामने की ओर खेलना चाहते, गेंद की लाइन से दूर थे। ऐसे में कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। 18.1 166 पे 7। अच्छे खासे दर्शक आज जिस मैच का आनंद लेने के लिए आज जम्मू यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। प्रायोजक जेके स्पोर्ट्स टाइम, जस्ट बुखारा, हमदान हरिकेन्स, HND और वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का, व्यूवर्स का, दोस्तों का बने रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए इस मैच को। ऑन साइड में मोड़ा खूबसूरती के साथ गैप में गई है गेंद और जाएगी बॉर्डर लाइन से बाहर। एक और चौका जायडा के खाते में। 21 पर पहुंच गए 22 गेंदों से। 170 पे 7 18.2 ओवर की गेंदबाजी। और अभी भी देखा जाए तो कम से कम 30 रन और जोड़ लेने होंगे। 200 तक पहुंचना जरूरी है और अगर ये 30 रन बची हुई 8-10 गेंदों से जोड़ती क्योंकि क्षमता है। अगर नासिर गने टीम किस प्रकार का प्रदर्शन देते हैं अपनी टीम को, क्योंकि सुल्तान की बात करें तो बल्लेबाजी की अगर हम बात करें बहुत ही मजबूत कदम लेकर के आए हैं। अगर बल्लेबाजों में बात करें वसीम काचरू आपके पास, उसके अलावा आसिम बशीर, फिर अर्जुन सिंह, तजमुल बाबा, आसिफ रसूल, उमैस इत्तू, नासिर गनई, आदिल दादा, आजिम राथर, ओवैस बाबा। आपके पास बहुत जाहिदार, बहुत सारे विकल्प हैं बल्लेबाजी में। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें मैं समझता हूँ नंबर 10 नंबर 11 तक आपके पास 10 तक तो बल्लेबाजी है। ओवैस बाबा मात्र एक ऐसे, हालांकि अंत में वो भी कुछ बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, पर आजिम राथर तक आपके पास बल्लेबाजी है। गेंदबाजी की अगर हम बात करें 2 प्रमुख हथियार, आजिम राथर स्पिन गेंदबाज, ओवैस बाबा तेज गेंदबाज, आसिफ रसूल आपके पास। और विकल्प की अगर हम बात करें आपके पास आसिम बशीर भी है, आदिल दादा भी आपके पास है विकल्प, और नासिर गनई एक बेहतरीन गेंदबाज है। तो एक बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन लेकर के उतरा है सुल्तान इस मुकाबले में। फिलहाल लो इस बाबा शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद थी ऑफ साइड में, खूबसूरती के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज पूरी द्वारा और एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े। 2 पर पहुंच गए वो। शौर्या 10 में, कुल रन संख्या 12। 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद OS Baba is bowling at the moment. He's got the ball in his hand. Captain goes to Baba. Not going to try with Nasir Ghana in the power play, looks like. Or is he going to wait for an over here? They're going to try an over from Baba. Let's see what Baba is going to do. Then they're going to think of Nasir Ghanai in the next over or in next coming overs. They have plenty of options in the lineup, but we have shorter dimensions here. A slip is in place and Shaurya is so nice. Look at that one. Scare on the off, down to the boundary. Another quality for proper cricketing shot for Shaurya Manhas. Just about a boundary. Take a look again. 16 without loss after 1.3. They're going at the rate of 10.67, which isn't bad. And they need to carry on with the same pace till the very last moment. 10 plus is going to be the asking rate. But Sultans need to keep things tight here. Worked away nicely. Don't play too many dots here. Avoid playing dot balls. That's going to bring pressure on you. When you need from very word go 10 plus and over, so it's gonna go upwards. To contend that, you need runs on each and every ball to keep that asking rate in control, which is mounting in between, which is gonna climb at times. 189 behind from 110 balls with 17 for none. NGCC, Nice Gems Cricket Club, responding to Sultan's 206, and Sultans were in all sorts of trouble in middle overs, thanks to the likes of Nasir Ghanai and Zaidar, who played till the very last ball and taking their side and ensured them that 205 is on the board. 17 without loss comes down the track. Puri Abhinav, and he goes after that one. Just Bukhara for 21 for none, and it's called as Puramara. On that occasion he comes forward, skips down the track and slapped it away.
Half tracker for Puri Abhinav using the pace of Baba. And hits it nicely. 185 more runs needed. Current rate is now 11.45. They need this approach till 7th or the 8th over from Puri and Shaurya. Wicket looks a bit easy at the moment. Shots of catch it. Will it carry? It carries, and he has thrown his wicket away. Trying to go square on the on. Not getting hold of that. So Puri Abhinav is on his way, and Baba strikes. Early blow, early jolt to NGCC, and Puri is on his way, and this time can't hit it completely. And Nasir, in your words, what you call it? Pura marne se kasir. Is it like that? And I want from your mouth these words. देखिए अधूरे मन से मारा था और वहाँ Thank जो you. उसकी कामनाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई और कैच लपक लिया नासिर गनाई ने, तो इस प्रकार से विकेट आया ओवेस बाबा को। ये देख लीजिए और पहला विकेट सुल्तान की टीम को मिलता है। ओवेस बाबा ने वो सफलता दिलाई अपनी टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। 2 ओवर की गेंदबाजी में ये पहला विकेट आया है और सुल्तान की टीम चाहेगी कि लगातार अंतराल पर विकेट प्राप्त करें, क्योंकि विकेट प्राप्त करना जरूरी है। बाबा एक विकेट की खुराक ले चुके हैं, अंतिम गेंद पर उनको विकेट। 1 ओवर 10 रन 1 विकेट। और एनजीसीसी की स्पेक 2 के बाद शौर्या 15.8 गेंदों से पर पूरी अभिनव आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 10.28 रिक्वायर्ड रन रेट, 10.50 करंट रन रेट। 185 चाहिए 108 गेंदों से। और देखना होगा शौर्या मनहास के साथ किस बल्लेबाज को ज्वाइन करने का अवसर मिला है। नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए यूनिवर्सिटी ग्राउंड जम्मू, बिग JKPL। छठा मुकाबला, दूसरी पारी। सुल्तान का पहला मुकाबला, एनजीसीसी का दूसरा मुकाबला, और पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, पर यहां जीत अर्जित करनी बहुत जरूरी। एनजीसीसी को नाइस जेम्स क्रिकेट क्लब को आसिफ रसूल पिछले ओवर की अगर हम बात करें, 1 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, उस पर 11 रन खर्चे थे। अब दूसरे ओवर में वो गेंदबाजी करेंगे शौर्या के लिए। अच्छी गेंद थी मिडल स्टंप पे, खूबसूरती के साथ बहुत बेहतर गेंदबाजी करनी जरूरी, और बेहतर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं आसिफ रसूल। समीर सिंह का इस्तेमाल किया गया है, समीर सिंह। और देखना होगा समीर सिंह किस प्रकार का प्रदर्शन दे पाते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार हवा में उड़ाया गेंद को, उस ओर फील्डर जा रहे हैं पर नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। और शौर्य बहुत बेहतर बल्लेबाजी, एक इंटेंट दिखाया, एक अप्रोच दिखाया, एक एग्रेसिव बल्लेबाजी का प्रदर्शन अब तक उन्होंने किया है, क्योंकि जानते हैं रिक्वायर्ड रन रेट को कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने यहाँ से जरूरी है। और विकेट आपने एक खोया है पर 9 विकेट हाथ में, तो उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अच्छी गेंद थी पर एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। 1 रन जरूर मिल जाएगा। तजमुल बाबा के पास गेंद, 1 रन और समर 0 पे सामने। शौर्या 20 पे 11 गेंदों से 26 पे 1, 2.3 के बाद तीसरा ओवर। 10.40 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने, 5 आए इस ओवर में। खराब गेंद लेग स्टंप पर खूबसूरती के साथ क्लायो के दम पे, बहुत बेहतर, पर यहां सीधे खिलाड़ी के पास कोई गलती नहीं की। आजिम राथर ने कैच को पकड़ लिया और आसिफ रसूल को भी मिल गई सफलता। 26 पे दूसरा गंवाया है नाइस जम क्रिकेट क्लब ने। और ऐसा लगा कि शायद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है, क्योंकि यहां से प्रतीत हुआ, पर अंत में देखा गया कि गेंद सीधे हाथ में आई है। शौर्या अभी भी नाबाद है, पर समर आए और चले गए। यहाँ पे ये पार्टनरशिप बेहतर निभाने का प्रयास, स्टार्ट बेहतर मिला था पर विकेट गंवाया। यहाँ समर आए थे, थोड़ा स्टार्ट देना जरूरी था, सहयोग करना जरूरी था, पर अपना विकेट गंवा बैठे। तो यहाँ से कहानी में ना वो ट्विस्ट आएगा, परिणाम बदलेगा। जब आप शुरुआत में विकेट गंवाते हैं तो फिर आस्किंग रेट भी बढ़ता चला जाएगा, दबाव आएगा आप पे। फिर 206 आप चेज कर रहे हैं। आसिम बशीर ने संभवतः वहाँ पे कैच लपका है। जी हाँ, आसिम बशीर ने बहुत बढ़िया कैच लपका और पारी हुई समाप्त। समर सिंह की 26 पे 2.4 के बाद 2 गेंदें इस ओवर की शेष। 10.38 तक रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है। करंट रन रेट अब 10 से नीचे गिरता हुआ 9.75, 1.4 ओवर 16 रन 1 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण। यूनिवर्सिटी ग्राउंड जम्मू खूबसूरत, शानदार, बेहतरीन ग्राउंड, आकर्षक वातावरण क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखा जाए। छठा मुकाबला और इस छठे मुकाबले में सुल्तान ने पहले बल्लेबाजी, हालांकि आज शुरुआत खराब रही थी। सस्ते में पहले आसिम बशीर, उसके बाद वसीम काचू ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेले, लेकिन अंत में अपना विकेट गंवा बैठे। फिर उसके बाद कुछ पार्टनरशिप और अंत में वो पारियां जाहिर डार और नासिर गनाई की, जिसके चलते टीम ने 205 रन बनाए निर्धारित 20 ओवर में और 206 रनों का विजयी लक्ष्य सामने। नाइस जेम। खराब शुरुआत, 2.4 में 26 पर 2 विकेट गंवाए हैं। 180 और चाहिए। एक विकेट अभी तक मिले हैं, 2 विकेट मिले हैं। आसिफ रसूल को 1 विकेट और 1 विकेट मिला है ओवेस बाबा को।
मोमिन मुजफ्फर अब नए बल्लेबाज, और मोमिन मुजफ्फर को अच्छी पारी खेलनी ज़रूरी है। यहाँ पे टीम को आवश्यकता भी है एक बेहतर पारी की। उस पारी को निभाना ज़रूरी, उस पारी को खेलना ज़रूरी, क्योंकि आवश्यकता है। और ऐसे में अगर देखा जाए मोमिन मुजफ्फर और शौर्य मनास, ये जोड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण। सुल्तान चाहेगी कि यहाँ से एक और विकेट तलाशे। पावर प्ले में कम से कम 2 से 3 विकेट प्राप्त करने ज़रूरी है, फिर जाकर के दबाव आएगा। क्योंकि ये जो आप हमेशा जिक्र करते हैं कि यंग ब्रिगेड है, युवाओं को अवसर मिला है, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, पर उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मोमिन मुजफ्फर अब सामने। अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद। हर आसिफ रसूल की अगर हम बात करें तो चतुरता उनके रग रग में भरी है। वो बेहतर गेंदबाजी करते हैं, खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं, अच्छी खासी गति के साथ, और कभी कभी गति का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो वेरिएशंस उनके पास हैं, विविधताएं उनके पास हैं, उन विविधताओं का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा सिंगल, 1 रन और खाते में। ओवर की हो गई समाप्ति, यहाँ 3 सवाब 27 पे 2 एनजीसीसी। 2 for 27, going 9-0 exactly. 179 behind from 102. That is equation for you. We're using SC balls in the tournament. Believe and become. You got to believe. You need that belief, and you can do wonders to become something that is going to be a formidable force to reckon. And it's 27 for 2. Our over number 4 is about to start. Adarsh Verma to bowl. Zenagir Express has got the ball again. First to be removed, one of the batter. Thank you, Emery Clarkby. Thank you very much for your love. And the other gentleman alongside Emer. Thanks a lot. And there is a slip in place, driven straight. And there is a man made off. There is no need to risk here. Just stick to basics. Don't throw your wicket away. Keeping one thing in mind, Nazir, the dimensions. I still believe even miss it will go the distance. It's going to carry all the way. So there is no need to rush. Just stick to the basics and take time. You got all the time and ample time in the world. What Sultans did earlier on, you can repeat that. From no wide to 205. You need that struggle, that hard work and determination. 2 for 27 at the moment. This young brigade, directed needed, would have been third one in the kitty. Unable to hit the bullseye. Hurled that one with tremendous sense of urgency. 178 behind from 100 balls. Big JKPL underway. Match number 6. We have another doubleheader coming your way tomorrow. So brace yourselves for tomorrow. Busy day again. And Sultans are going to be again in the house tomorrow. 2 for 29. We are into the 4th over of the game. Current rate is 7.91 and the required rate is 10.84. Current rate is dropping down. It's dropping slowly and gradually. Nice Gems will face Power Panthers tomorrow. And Sultan will lock horns with Valley Stars Ganderbal. That's going to be the second for tomorrow. Overall game number 8. And then number 9 versus Baba. And that one, look at the pace from Baba. There was a quicker one, a quicker stuff from Baba there. Quickie one. And it did quicken up a bit of the surface. 177 behind. Momin Muzaffar and Shaurya Manhas. Two experienced lads in the middle. Momin Muzaffar and Shaurya Manhas. But situation isn't easy. Isn't a promising one. It's a tricky and a difficult phase for NGCC. Sultan's lost plot from 41 onwards. And talking of the team NGCC, they lost the plot within 4 overs, and till now Sultans were 41 with just one down. That was the wicket of Asim Bashir, and in response NGCC are 30 for 2. They lost both the batters in quick succession. 176 behind. The asking rate is gone up to 11 now. After 4 they are 30 with 2 wickets down.
Asif Rasool smiling. And Asim stopped at what could have been a boundary. That was thrashed. That was hit hard by Momin Muzaffar. Good combination. Talking of the Sultan Warriors, such a wonderful lineup. Asif Rasool is there. Tajimal Baba is in the lineup. Adil Dada, Nasir Ganai, Asim Bashir, Wasim Katsur, Azim Rathar, Arjun. The only outsider in the lineup. Zuhur Zolo is there. Straight into the hands, and he dropped. Chance gone begging. Asif Rasool isn't happy at all. He's having a word with Tajimal Baba over there. Now he's telling him that just go there. 31 for 2. And he's asked to stay around that long off area. Now Manhas is going to be on strike. Shaurya Manhas. Yesterday he shown that spark with the bat, and it was full of luster, and that was wonderful display with bat. Today he has an opportunity again, and he's already on to 21. Asif to Shaurya, and Shaurya hits that one through the line, and that's all the way for a massive 6. And what a batter he is, what a cricketer he is. Shaurya Manhas, just Bukhara 6, 37 for 2. Shaurya Manhas is going to keep their hopes alive. He tripped it away a little bit, and he was batting little leg side. Easy pickings. And look at that one again, extension of arms. And with that 6, there is addition to the tally, 2 for 37. Shaurya on to 27 of 13. Next one is a batter one from Asif. And Shaurya, the batter thing about Shaurya is he's able to rotate with every passing ball. With size 6 coming, then the next ball is driven straight for a single. That is the difference between Shaurya and rest of the pack. That sets him apart. 2 for 38 after 4.3. Here is Asif again. Comes down the track. Momin Muzaffar. Step out for a single. 39 for 2. This over 9 coming off 4 balls. Shaurya 28 of 14 is batting with a strike rate of 200. And Momin Muzaffar on to 5 of 9 balls. This is game number 6 underway. We have 2 more games for tomorrow. Valley Stars will be locking horns with Sultan Warriors. Punched straight to fielder, not for runs, a dot delivery. As we watch Asif again. 5th ball is a dot delivery. Last ball of his over. Shaurya goes big, straight down the ground. And it is on the bounce into the fence for 4. He closes the 5th over with a boundary. 43 for 2. Fitting reply. Good finish to over number 5. And Asif is gone for 30 of his 3 overs. Economy of 10. And Shaurya Manhas promises to be a wonderful cricketer. Believe in Nazir. He's going to be a future star in making. Drill straight down the ground. And with that 4, there is addition to the tally. Just Bukhara 4 coming. Thank you, brother. Coming up with something special. You know that chai ki chuskia, one is going to enjoy it. And no, Nazir, people here in talk of the subcontinent, are India and rest of the countries here in the subcontinent, Barisagir. People love chai, tea, isn't? Chai ki chuskia are always important. And you know that All India Radio used to broadcast that program. Program one was that lunch, or the other one was tea time gupshup. You remember that? Thank you, sir. There was a tea time gupshup, but we can't do that gupshup here. It's commentary going on. Serious discussion is going on, and we have an assignment underway here. But we can call it a tea time gupshup. थैंक यू मनोवर 43 पे 2 5 ओवर की गेंदबाजी हर बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ टी टाइम गपशप पर इसमें अगर देखा जाए तो ये पार्टनरशिप जरूरी है। शौर्य मनहास बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों में 32 पर जिस प्रकार के स्ट्रोक उन्होंने खेले, जिस प्रकार के प्रदर्शन अब तक उनकी बल्लेबाजी में दिखा है, जो इंटेंट दिखा है, जो अप्रोच दिखा है और जो रनों की भूख दिखी है इस खिलाड़ी में, वो कमाल के। फिलहाल 9 से 5 मोमिन मुजफ्फर। Not just hunger for runs, but the shot selection is proper. Classy batting against Asif Rasool. बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि लगातार प्रयास कर रहे थे। इस बार हवा में उछली है गेंद, उस और खिलाड़ी
और आसिम बशीर और आदिल दादा पहुंचे थे, पर आसिम बशीर ने गेंद को पकड़ लिया वहां पर और इस प्रकार से पारी हो गई समाप्त। छठे ओवर की शुरुआत 43 पे 3। यहाँ तीसरा विकेट मिलता हुआ सुल्तान वॉरियर्स की टीम को। Right collision and Asim telling Adil, what were you doing here? What's gone wrong with you? Adil says, oh come on, take it easy, don't worry. Yeah, I felt it. I just sneezed through something and I felt that it's going to be something special. And talking that, I just inhaled something, the steam of it, that told me, no, it's going to be special tea. Believe me. जी बिल्कुल, और मजा आ गया, काफी ज्यादा टेस्टी ये चाय। और निश्चित तौर पे ये देख लीजिए, ये दो खिलाड़ी और अरे बाल बाल बचे एक दूसरे के साथ, तो कोलाइड नहीं हुआ, कोलिजन नहीं हुआ, नहीं था शायद। Well, collision, we needed this sound which is going on in the backyard. 43 पे 3, 5.1 ओवर की गेंदबाजी आकाश चौधरी। गेंदबाजी से उन्होंने एक बल्लेबाज का काम किया था, 56 रन 4 ओवर में दिए थे, पर अब बल्लेबाजी में आवश्यकता है तो वो जो हम कहते हैं ना, वो हिसाब चुकता करना है, जहां पे उनको उस प्रकार का प्रदर्शन करना जरूरी। जी बिल्कुल, 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन खर्चे थे, पर यहाँ पे आपको वो रन चुकता कर रहे हैं तो फिर बल्लेबाजी करना जरूरी, बेहतर प्रयास करना जरूरी, यहाँ पे बल्ले से रंग दिखाना जरूरी। शौर्य बनास को, शौर्य 32 और आकाश चौधरी 0। 43 पे 3, 5.1 ओवर की गेंदबाजी। नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। छठे की शुरुआत 89 गेंद 163 रन बनाने हैं। पहली गेंद पर विकेट नासिर गनई का चयन किया गया, पहली गेंद पर सफलता मिली, अगली गेंद लेकर के तैयार। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी होती हुई राइट आर्म ओवर द विकेट। एक और गेंद लेकर के बहुत बेहतर शानदार प्रदर्शन। 43 पे 3, शॉट अच्छा है पर फील्डर के पास, क्योंकि मोहम्मद ऑन दायरे के अंदर तैयार। आदिल दादा किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए बेहतर फील्डिंग करते हैं और अभी तक उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई और बेहतर प्रदर्शन अब तक चल रहा है गेंदबाजों का। 163 चाहिए 88 गेंदों से, 5.2। 43 पे 3, बिग JKPL छठा मुकाबला। नासिर गनई इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंदबाजी, स्टंप्स पे गेंदबाजी होती है। ऑफसाइड में तजमल बाबा के पास थ्रो जरूर किया पर सुरक्षित पहुंच गए थे क्रीज में, एक सिंगल पूरा कर लिया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। पहला रन इस ओवर में 3 गेंदों से 1 रन आया है। शौर्य 32 सामने, आकाश चौधरी एक खाता खोल लिया 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से। रिक्वायर्ड रन रेट 11.17 का 44 पे 3, 5.3 ओवर, 87 गेंदे 162 चाहिए। नासिर गनई के बल्ले से वो 46 रन आए, ताबड़तोड़ पारी, विस्फोटक पारी वो 15-16 गेंदों से, और अब गेंदबाजी में अवसर मिला है, एक विकेट भी मिल चुका है अपने पहले ही ओवर में 1 रन देकर के। बहुत बेहतर शानदार प्रदर्शन, आकर्षक प्रदर्शन। ऐसे में जिक्र करें तो अभी भी 162 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। एक सिंगल मिल जाएगा, ऑन साइड में खेल करके 1 रन और जोड़ लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 रन के साथ अब आकाश चौधरी पहुंच गए सामने। स्ट्राइक पे 33 पे शौर्य बनास, 45 पे 3, 5.4, 2 सिंगल इस ओवर में, और 2 गेंदें अभी भी शेष इस छठे ओवर। पावर प्ले समाप्त होने जा रहा है। 45 पे 3 और 3 विकेट आपने प्राप्त कर लिया है। सुल्तान की टीम में थोड़ी से उत्साहित मूड में जरूर नजर आएगी, पर यहां से अभी काफी लंबा सफर तय करना है, आसान है नहीं। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। पुल क्या ऑन साइड में गैप में गई है खूबसूरती के साथ, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। ये चौधरी के बल्ले से आता हुआ चौका, आकाश चौधरी 5 पर 3 गेंदों से जस्ट बोखारा। 49 पे 3, 5.5 ओवर की गेंदबाजी और खूबसूरती के साथ। अतिरिक्त उछाल था गेंद में, पर सही समय पर पड़ा, गेंद को सही समय में ये स्ट्रोक आया, मिलन सही हुआ और 4 रन बटोर दिए यहां पर बल्लेबाज आकाश चौधरी ने। आखिरी गेंद ओवर की 5.5, 49 पे 3। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध, जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए वहां दर्शक नजर आ रहे हैं अपने अपने स्थान पर। ऑन साइड में हल्के हाथों के साथ खेल करके एक सिंगल दौड़ लिए दोनों बल्लेबाज, और उस पर फील्डर जब तक आकर के गेंद को फील्ड करते ओवर से तो अंतिम गेंद पर रन आया। ओवर की हो गई समाप्ति, पावर प्ले समाप्त 6 के बाद 50, 3 विकेट पे NGCC। Just need a partnership here. 50 on the board. That 50 brought to you by Just Bukhara. Need a partnership of 30-40 runs. Make it interesting chase here. Required radius climbing. That's another concern. But a good start. I'm going to repeat my words again. Well begin is often, believe me. Good start matters. Look, they got a good start. Now they're 50 after 6 overs. They're very much in with a chance here. But they need partnership here. 30-40. We'll take it to the 100. And next 30-40. We'll bring them back into the game. So they need overall 80 more runs
in next 8 or 9 overs, so that they need 40-50 in remaining 4 overs at the fag end. But here they need that partnership from over number 7 till over number 15. Keep wickets intact and keep going at the rate of 7, 8 and over. 7 over, 8 and over. In between you're going to get 10, 12. Who knows? It can be more than that. But first thing and the foremost thing is to stitch a stand here. And look for that partnership. Dear beloved listeners, what's going on? It's the Chai Ki Chuskiyan going on. I'm sipping in at the moment. It's 50 for 3 as we are in over number 7. Here we are in over number 7. Akash Chaudhary and Shaurya Manhas in the middle, driven through the onside. He's a lovely lad when it comes to the stroke play. He's got all the shots from cricketing book. He's got that wide range of shots. He's going to use all of them here. And enjoying, and you know that one is Lipton. One is that something special, but this one is full of flavor and it's tasty one, believe me. 51 for 3. It's extraordinary, no doubt. 3 down. Driven again. He's an artist with the bat. Artistic work is going on. He's just trying to draw that pattern as a designer in the middle. Dayal Singh and Harji, the third and fourth umpire for today's game. Gets hit on the pad. How is that? An umpire says it's nothing. Yeah, it did hit the pad, but there is a big daylight, so no problem with that. Halfway stage in the 7th over. That was a half-party shot from Azim. He's bowling with sunglasses on, goggles on. There is a little fumble, but can't prevent that single. One more run added to the tally. And you're watching JK Sports Time Facebook, more over YouTube, and this is also coming your way on Live Sports TV. May I remind you, those who are new on JK Sports Time YouTube channel, you can subscribe and press the bell icon and be the part of JK Sports Time, and to get notified and to receive the notifications in bulk, be the part of JK Sports Time. We're also in Play Store nowadays. Just install the app. High up in the air. Who's going to take this? Will he get to the ball? He gets to the ball! And he plucked that one. And look at the celebration from Azim Ratha, using his point figure, telling him the direction. Just go the way. This is the way. And trace the path. And go back to the hut. Take a look again. He plucked that one. Blind. And that catch brought to you by Just Bukhara. Brilliant one. And those who are new on JK Sports Time want to know what Bukhara is. It's a restaurant in Magam area. Whenever you are heading towards Gulmarg, it's on the left corner, on the left shoulder of the National Highway. When you're heading back home from Gulmarg, it's on the right shoulder. Another day, just go there and enjoy the Kashmiri Wazwan and flavor. Believe me, it's biting cold, it's stinging nowadays, and you're gonna enjoy that. Nazir has enjoyed a lot there, so that's why he's not ready at the moment. Well, I can feel that. It is 53 for 4. This is the 7th over we are in. Yeah, these things are going to happen, and this is going to cause, it has, you know that there is always 2 sides of a coin. One is the better part, the other one is going to be that negative impact is always going to be there. We have a screen right in front, but this is going to cause problem here. And you're exposed to it. So it isn't easy. It's all about UV rays. And Achintya comes in, Achintya Khujuria. And here is a lot of concern in the middle. Chinta ka Vishay is there and Achintya comes in. Will he find a way? And it's just like that, apolitical and politics. Or the political, and just like that, Achintya and Chinta. Is it like that? Let's see. 53 for 4. This is the 7th over we are in. One last time in the server. Required rate gone up to 11.62. It's touching 12 and over. It's heading towards that 12 run per over mark. That's going to be difficult, tough, an uphill task, tough ask, tough chase. Tricky situation, and the bowlers tightening the screws, making the batters toil hard. They're calling the shot and keeping batters checking, guessing time and again. One last time in this over with a slip in place. Shipping for that sweep shot. He gets away with that one. Hits him outside the line of off. 7 gone.
Achintya survives, and look at Achintya. Oh, it reminds me of that. Have you seen that? सात समाप्त 53 पे 4। अचिंत्य खजूरिया, आकाश चौधरी ने बात छोड़ी प्रयास में, पर देखा जाए तो अभी भी 6 विकेट हाथ में है। 7.57 प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 11.177 का, और दबाव में है इस समय सुल्तान वॉरियर्स के विरुद्ध नाइस जेम्स की टीम, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना है तो 206 तक पहुंचना है, बेहतर प्रदर्शन जरूर करना है और सटीक लेंथ पे आपको गेंदबाजी करनी, क्योंकि साझेदारी की आवश्यकता आकाश और अचिंत्या को। अचिंत्या 0 पे 1 गेंद से, और आकाश चौधरी ने 8 रन बनाए 7 गेंदों से। बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन जरूरी है। अर्जुन सिंह का इस्तेमाल, परिवर्तन किया गया है गेंदबाजी में। 53 पे 4 अर्जुन सिंह पहली गेंद लेकर के बाएं हाथ से थोड़ा वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास था। सीधी रहती हुई गेंद पड़ने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने पे पकड़ किसी रन के 77 गेंदों में 153 चाहिए। 7.1 में 53, और अच्छा खासा और बेहतर मुकाबला अभी तक चला है, पर इस समय दबाव जरूर है नाइस जेम्स की टीम पे। इस बार ऑफ साइड में खूबसूरती के साथ एक सिंगल के लिए वहां पर दौड़ने का प्रयास था दोनों बल्लेबाजों का, पर उसमें सफल नहीं हुए। 2 डॉट लगातार। 7.2 53 4 विकेट पे 53 पे 4। 7.2 ओवर की गेंदबाजी। एक बार फिर बैकफुट पर जाकर के खेला जरूर, पर मिड ऑफ तैनात है। गेंद सीधे जाहिदार के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड कर दिया। रन लेने का प्रयास था नहीं। 53 पे 4। 7.3 ओवर की गेंदबाजी। 3 लगातार डॉट गेंदें। दबाव इस समय आकाश चौधरी पे। अर्जुन ने अच्छी गेंदबाजी की, लेफ्ट हैंडर है, बहुत बेहतर गेंदबाजी। गति का ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है। स्टंप्स पे आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर आप रन गति पे अंकुश लगा सकते हैं, और वो चीज दिखी है इस ओवर में। 4 लगातार डॉट गेंदें अर्जुन सिंह द्वारा। अच्छा ओवर अभी तक घटा है अर्जुन का। आकाश 8 पे 11 गेंदों से। दबाव में जरूर आकाश बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। ऑन साइड में मोड़ा खूबसूरती के साथ मिड विकेट क्षेत्र पे खिलाड़ी तैनात। सिंगल मिल जाएगा, और जब तक गेंद को फीड करके थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय एक सिंगल लेने का। 1 रन और खाते में। 54 पे 4। 7.5 ओवर की गेंदबाजी। 73 गेंदें, 152 रन चाहिए इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। अंतिम गेंद का आना बाकी। ये पहला ओवर, मात्र 1 सिंगल आया है। अचिंत्य खजूरिया सामने, अंदरूनी भाग पर 1 सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ इस ओवर से आए 2-8 समाप्त। 55 पे 4। एनजीसीसी आकाश चौधरी 9, अचिंत्य खजूरिया 1। और सुल्तान की टीम ने बेहतर वापसी की है इस मैच में। हालांकि 6 विकेट सुरक्षित है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं है। सभी प्रेडिक्शन इस खेल में फेल है, पर देखा जाए तो एक बड़ी पार्टनरशिप की आवश्यकता ना। आपको एक एग्रेशन दिखाना जरूरी है, एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाना जरूरी बल्लेबाजी में। और दूसरी बात यह है कि आप इस साझेदारी को बेहतर करने का जितना संकल्प लेंगे, जितना बेहतर इस साझेदारी को कर पाएंगे, उतना बेहतर होगा, क्योंकि पार्टनरशिप मात्र एक उपाय है आपके पास कि आप इस लक्ष्य के नजदीक पहुंच सकते हैं। अन्यथा ये मुकाबला आने वाले समय में, क्योंकि आस्किंग रेट जो 12.58 का पहुंच चुका है, तो बढ़ता चला जाएगा। जितना आस्किंग रेट उतना दबाव आप पे। आजिम रातर फ्लाइट देने का प्रयास, मिडल स्टंप पे सामने बॉलर की दिशा में, पर रन लेने का वहां पर प्रयास दोनों बल्लेबाजों का सफल होता हुआ। पहली गेंद पर सिंगल। 56 पे 4। 9वें ओवर की गेंदबाजी। आकाश चौधरी 9 पे 12 गेंदें खेली है। 3 से 2 अजिंक्य ने बनाए हैं, पर 1-2 बड़े ओवर चाहिए। यहां पे ऑफ साइड में ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ अब रन संख्या 1-1 लेकर के 57 तक पहुंची है। 4 विकेट पे आसिम रातू को 5 रन देकर के 1 विकेट मिल चुका है। 1.2 ओवर की गेंदबाजी। पिछले ओवर में विकेट आया था, ये उनका दूसरा ओवर है। लेंथ पकड़ करके रखी है ऑफ स्टंप के आसपास। हल्का सा टर्न, विद द टर्न खेले जरूर। आसिम रातू ने खुद फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। 9वां ओवर। 57 पे 4। 3 गेंदें इस ओवर की आने अभी भी बाकी हैं, पर आसिम रातर का बढ़िया ओवर। पिछले ओवर में भी 2 रन आए, इस ओवर में 2 रन, और यहाँ पर एक सिंगल का प्रयास दोनों बल्लेबाजों का, उसमें असफल। 2 डॉट गेंदे, 2 सिंगल। 4 गेंदें हुई है एनजीसीसी। 57 पे 4। 8.4 के बाद 2 गेंदें बची है ओवर की। हल्की धूप मैदान पे छठा मुकाबला बिग जेकेपीएल
कल जुड़ेंगे आपके साथ 10 बजे 2 मुकाबले और लेकर के। निश्चित तौर पर जरूरी है क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, पूरी तरह से बीट हुए स्टंप्स भी खेले वसीम काचुर ने, पर सुरक्षित पिछला पांव क्रीज में कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं और 10.57 पे 4 एनजीसीसी। अचिंत्य खजूरिया चिंतित नजर आ रहे हैं अचिंत्य, चिंता करना भी चाहिए क्योंकि आप रन आ नहीं रहे हैं, विकेट आपने 4 गंवाए और पिछले ओवर में 2 रन, इस ओवर में भी 2 रन, तो पिछले 11 गेंदों से मात्र 4 रन आए हैं, एक सिंगल और जोड़ लीजिए तो पिछले 2 ओवर में 5 रन आए हैं। फिलहाल 9 की समाप्ति 58 पे 4 एनजीसीसी 66 गेंदें 148, 6 विकेट सुरक्षित। And that was Shaurya Manhas, the number 4 to go. Big fish caught in the net. The massive blow to their hopes. NGCC, I'm talking about the team NGCC. Their hopes are blown away. And the big fish caught in the net, that is Shaurya Manhas, Akash Chaudhary and Achantya Khajuria. The 2 men in the middle, they need to take care of the rest. Well, it's all about nowadays, money matters. Nazir, you know that Gandhi has a great respect everywhere. Gandhi matters and money matters. 58 for 4 after 9 overs. It's all about commercialization nowadays. Even international stars bidding adieu to their international cricket and playing league-based tournaments. That's high up in the air. Should be easy one. It is. Juicy one. And look at the celebration from Arjun Singh. As a batter, he was lost in the middle with the ball. Look at the noise he made after getting that first one. It's 58 for 5. Hop their team back to hut. And Achantya is on his way back to pavilion, and Sultan Warriors are seriously back into this game. The one man who possesses that fire, that power, that is Shaurya Manhas. Others are evenly talented, no doubt about that. But this young crew needs a lot of care and needs a lot of backing from their owner. And I believe this is the young nursery. If nurtured properly, they are going to be the future stars in making. But everyone's dream in India, the 1.4 billion population, everyone dream to become Virat Kohli and Rohit Sharma. That isn't easy. That isn't everyone's cup of tea. To become Rocco, to become that Jodi, you need resilience of highest level. And the class of next level isn't to become Virat and Rohit. And Virat has 85 hundreds under his belt. Well, I'm dreaming that when I'm going to bring up my first. Well, 85 for 5. 58 for 5. Sorry, correction comes in. Short pause in play. They needed a kind of breather. Likewise, we need it here in the com box. And it's Vinay Gupta, the new man in. He replaces Achantya. Akash Chaudhary is still there. And Chaudhary with ball. He was expensive. Now with the bat, he can compensate. Muzaffar Tele is here. And enjoy Tele nowadays. 58 for the loss of 5. What's going on in the background? 58 for the loss of 5. We're into the 10th over. $58 for 5. Arjun Singh, he's in his second over. He's picked up 1. First over, that's really economic, and the second over, what a start to the second over. He got his wicket here, and he's picked up that much needed one in the form of Achantya. Now Vinay Gupta and Akash Chaudhary in the middle to take care of the rest. But situation is deteriorating. They derailed from their original path. Vinayak need to be Nike with the bat. Is he going to be the superhero Nike with the bat? Let's see. 5 for 58 into the 10th over, 65 balls, 148 behind. Required rate is 13.66. It is heading towards 14 and over. No slip, short fine in place. Drives the ball, find a Zaidar there. Zaidar, Badgam based cricketer from Humhama, Badgam. With 5 down, 58 on the board. Oh, look at that one.
Little tail away. Arjun bowled really well here. With bat he failed miserably. It was miserable outing. Now with the ball he's making an impact here. He's in his second over, gone for just 2 and picked up a wicket. That's high up in the air. Inside out he goes. And there is a man. Azim makes no mistake. Holds on to the ball. It was just like that. Aram se, young man, Aram se. And so does he. Aram se just inches inside the boundary line. With cool head on his shoulders. And young man makes it happen in the end. It's wicket number 6 down. 58 for 6. Take a look again what happened there. He gone inside out. And there is the ball coming downwards. And oh, it does well. Somehow cling on to it. Somehow it was about to pop out. But he gets the second one. And Arjun Singh is delighted. He looks like Sailton. Yeah, bit like with that hairband. Little bit resemblance. 6 for 58 up to 9.4. Listen into the big dreams and big. Indeed big JKPL season 1 and it's match number 6. We have 2 more games lined up for tomorrow. Sultans will be playing their second game tomorrow afternoon against the likes of VSG. That's going to be a great game of cricket. Believe me, crackerjack and the high voltage where Nadeem Dar is going to face Sultan Warriors. The last season captain is going to be the captain, the leader of other side. Is going to be opponent here tomorrow. And a lot of anticipation for that game and people looking forward. Cambodge. And they're going to face the likes of Panthers tomorrow, early morning. It's going to be young blood versus young. Diamond cuts diamond. In the second half again, 2 big teams locking horns. Heavyweights are going to be here in action tomorrow. But right now it is 6 for 58 with Lovepreet Cambodge. What a name he's got. It reminds me of Anshul Cambodge. Terrific lad in shorter format nowadays, even in the longer format when it comes to the basic level cricket of Ranji and other structure in country. And Lovepreet Cambodge has got the ball in his hand. Oh, he's got the bat in his hand. Lovepreet. And what kind of Preet he's gonna show with the bat? Is he gonna show that connection? Gets hit on the pad. And up goes the finger. He's given him out. And straight away he has referred to the TV umpire. Asked it for the DRS. Now the technology will come into play and technology will have a final say. It will decide the fate of Lovepreet Cambodge. Only thing that's going to save him, that is going to be that impact. Otherwise, technology will have a say. It's going to say that you're going to go. Decision pending. Let's see what is in store. The simple message for TV umpire is let the cat out of the bag. Let the script out. What is loading? He's got all the angles over there. He's going to check it from different angles. The first thing is, I think he has checked that front foot. Moving on to the other side. There it is. Was that in contact with the bat? I don't think so. Moving on to the ball tracking. Gets hit. And he crouched low on that occasion. Gets hit on the back leg. The only thing that's going to save, it should be missing stumps. Even umpire's call won't save him because he's given him out. Checking from this angle, looks like pitching within the line. Now that's the question, where the ball is going. If it is missing stumps, that's the only thing to survive here. Otherwise you're a goner. Even umpire's call will say you're on your way. Wait a while. TV umpire checking. Here comes the ball tracker. This is over number 10 we are in. Eagerly waiting. Looking towards the big screen. That signage over there. I think it's pitching in line.
getting hit on the pad. It did deviate a bit. Here, that is the question, I think, that's going through his mind at the moment. Did it deviate after hitting the body? That's the question here. They're checking that time and again. Surely pitching in line. That's what I was talking about. That's what I point out. He's gonna check this. There is a little deviation. It deviated a bit. Suspense continues. All eyes on big screen. Naveen Saini, the man who's got a job on his hand, is alongside TV umpire, and he's got the technical team over there. Wait on, wait on. Look at their eyes, ravish at feasting eyes. They want to see the outcome, the result. (148 more runs needed from 62. Decision pending. Coming to the ball tracking. He's a left arm spinner. Ball track. Still waiting for the ball tracker to come into play. And we shall come to know where the ball is going. And if it is going to be umpire's call, he's still going to be out. The only thing that's going to save him is that it should be missing stumps or pitching outside the line of leg. But it looks it's pitching in the line. Where is ball tracker? It's taking time. Gets hit on the back leg. I think he's trying to check that is Pat involved or not. But from this angle it's easy to tell there is no connection, but it isn't that far from the bat too. Look. Here you needed that ultra edge or that Sneeko. Ball tracker when ready, please.
that podcast of Nasir Hussain. I still remember that in that podcast he discussed about that it was Virat Kohli who took that dig at it, that technology the umpire's call. And so finally he's given him out because of the umpire's call. Wicket number 7 down. Lovepreet is gone. Lovepreet Kamboj, with all the burden, with all the boat on his shoulders, he's going to go back to pavilion. It's the 7th one, bites the dust. And look at Arjun Singh, he's delighted at the moment, but tomorrow is going to be the day. Tomorrow he will be tested by VSG. Tomorrow is going to be the testing time for Sultan Warriors. They're going to check their strength tomorrow, because tomorrow is going to be VSG. And they shall come to know what they have in kitty, what they're lacking, and how to overcome all these things, because tomorrow is VSG, a strong team in the tournament, are going to face Sultan Warriors. So Sultans are going to face them. Newman walks in. He's going to be on a hat-trick. Hat-trick ball coming up. Shots of catch it. It doesn't carry. It landed yards before the man. 10 done. 7 for 59. 3 wickets in the Sam over for Arjun Singh. First over gone for 2, and this over 1 wicket and 1 run and 3 wickets in a single over for Arjun Singh. With bat failed, with ball, he has done the job for his team. 7 for 59, and this will surely improve Sultan's net run rate. It's going to mess you up, that upward moment in that NRR. धन्यवाद मनोहर। 10 ओवर समाप्त 59 पे 7। चौधरी 10, ठाकुर 1 और अर्जुन को 2 ओवर में 3 रन देकर के 3 सफलता है। तो यहाँ से अब पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही है टीम, क्योंकि यहाँ से मुकाबला जीतना आसान है नहीं। कोई महा चमत्कार करना है एनजीसीसी को, तब जाकर के इस मुकाबले में वो जीत अर्जित कर सकते हैं, नहीं तो उनके हाथ से फिसलता हुआ ये मुकाबला। पर कल सुबह जुड़ेंगे पैंथर्स और एनजीसीसी के मुकाबले के साथ 10 बजे, और उसके बाद फिर अगले हाफ में दूसरा मुकाबला सुल्तान और वीएसजी का, वो बड़ा मुकाबला, वो क्रिकेट का महासंग्राम। और देखना ना भूलिएगा, निश्चित तौर पे विस्तार से वो क्रिकेट की परिपक्वता जो है ना, वहां पे उसका विचार विमर्श होगा। जी हाँ, और निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो जरूर वो बड़ा मुकाबला होगा। फिलहाल यहां रन संख्या की बात करें, 11वीं की शुरुआत हो चुकी है 60 पे 7। और 1 रन और तो 61, 58 गेंदें, 145 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 2.2 में 8, 1 विकेट। राघव ठाकुर सामने, आजिम राथर गेंदबाजी कर रहे हैं। मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात सीधे उनके पास बगैर किसी रन के। ठाकुर 2 पे, आकाश ने 11 रन बनाए हैं। आकाश को तेज तरार पारी की जरूरत है। यहाँ पे 56 उन्होंने 4 ओवर में दिया है, और वो 56 का हिसाब चुकता करना है तो फिर बड़ी पारी के लिए जरूरी। 15.5 रिक्वायर्ड रन रेट 15 से ऊपर, और अब यहाँ से आसान नहीं है। हालांकि संभव तो है, पर अगर हम बात करें कि असंभव की स्थिति हो गई यहाँ से। लगातार बेहतर प्रदर्शन करना आजिम राथर का तीसरा ओवर, 10 रन देकर के 1 विकेट। अंतिम गेंद इस ओवर की बात करें तो 2 सिंगल 1 डबल, 4 आ चुके हैं 5 गेंदों से। 63 पे 7, 10.5 ओवर की गेंदबाजी। 11वां ओवर, अंतिम गेंद का आना बाकी। राघव ठाकुर और आकाश चौधरी इस समय बीच मैदान में एक प्रयास करते हुए अपने ही फॉलो थ्रो में कैच लपक लिया, और लीजिए एक और विकेट। दूसरी विकेट आजिम राथर को मिलती है। अंतिम गेंद पर विकेट, 2 विकेट आए हैं 3 ओवर में 10 रन देकर के आजिम राथर को। और 11 ओवर में 63 पे 8, राघव ठाकुर को वापस लौटना पड़ा। 6 गेंदें खेली, 4 बनाए। 14 से 11 पे नाबाद आकाश चौधरी। 143 चाहिए 54 गेंदों में 2 विकेट सुरक्षित। पूरी तरह से इस समय दबाव में नजर आई आज नाइस जेम्स क्रिकेट क्लब एनजीएसएस की। अगर बात करें नाइस जेम्स की बात करें, मुजदेली एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को, और उनके साथ सफदर अली इस प्रतियोगिता में नजर नहीं आए हैं, और देखना होगा किस टीम के साथ वे खेलेंगे। पर फिलहाल इस बात का मैं पुष्टि के साथ जिक्र करना चाहूंगा कि 11 ओवर समाप्त 63 पे 8 आखिरी उपचारिकाएं बची हैं, क्योंकि 9 ओवर आपके पास है, विकेट आपके पास 2 ही है। एलए
नए बल्लेबाज आकाश चौधरी के साथ 11, रिक्वायर्ड रन रेट 15.89 का, करंट रन रेट 5.73 का, 54 गेंदें 143, 9 में 143 बनाने, आपके पास विकेट सुरक्षित है नहीं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आसान परिस्थितियां यहां से रहने वाले नहीं है। नासिर गनई का चुनाव किया जा रहा है गेंदबाजी में। पारी का 12वां ओवर, पहली गेंद लेग स्टंप की शेप में, दिशाहीन गेंद, वाइड का निर्णय आएगा। 1 रन और खाते में, अतिरिक्त के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच गई है 64 पे। 8 विकेट के नुकसान। फिर ना पूरी तरह से आज फ्लॉप रही बल्लेबाजी। शौर्या मनास के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने खास समय नहीं बिताया विकेट पे, और शौर्या की पारी बहुत बढ़िया रही। एक युवा और बेहतरीन टैलेंटेड खिलाड़ी है। 32-35 रनों की एक पारी खेलने के बाद वो वापस लौटे, और उसके बाद लगातार अंतर के बाद एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया, जिसके चलते इस समय पूरी तरह से दबाव में एनजीसीसी 65 पे 8, 11.1 ओवर की गेंदबाजी, 15.96 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने 53 गेंदें 141 चाहिए जीत के लिए। नासिर गनई इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद थी, आवश्यकता के गलियारे में योग कराने का प्रदर्शन इस गेंदबाज का, सामने की ओर खेले उस ओर फील्डर तैनात, रन जरूर मिल जाएगा। 1 रन और 66 पे 8, 140 चाहिए जीत के लिए। 52 गेंदें आनी बाकी, 12 आकाश चौधरी और LA 1 पे नाबाद है। हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर, मुस्तैली दर्शक बीरगा में थे, उन्होंने कैच लपका है, पर 6 मिल जाएंगे जस्ट मौका अच्छा का। 72, 8 विकेट में 11.3 के बाद 72 for 8. Oh, take a look again. A clause, another. And it's a massive. Next one is a good delivery into the block hole, and he keeps it away to long on. There is Baba to take care. 73 for 8. We are into the 12th over. The required rate gone up to 15.95. It's touching 16 and over. Thank you, young boy. Keed is here. Here is the next one. Oh, flicked away nicely. Round the corner. He's going to collect. Oh, absorbed as well. Unbelievable stop. What could have been a boundary, and he limited the scoring down to 2. Excellent stop. Look at that one. On the slide as well. Oh, that's going to be the concern. Is he in contact? Is the ball in contact? Looks like. Oh, look. From this angle, looks okay there, but the question is there from this angle. Is the ball in contact? Yes, it's given as runs. 4 of them, just before 4 coming. Still a valiant effort to me. Was an easy one. When you are on the slide, it's never easy to balance. You got to control many things, but unable to keep that one in the play. So that's 4. An important boundary coming for NGCC. 77 for 8. They are 129 behind from 49 balls. LA on strike. Thank you. Big man from Badgam. Ajishwan is going to run down. Cheeky boundary coming. Second of the over. Nasir Ganai is unhappy. 2 was 1 for 25. 81 on the board for nice gems. One-handed. Thank you very much, little angel here. Soul Spirit. This is what Big JKPL is telling you guys, and we guys, thank you very much, and assalamu alaikum from our side. Going to be together again back home sooner. 81 for 8 after 12. 8 overs are going to come, 48 balls, and the asking rate is 15.63 and over. Yeah, we know, we remember the name. Okay, moving on. 81 for 8. Yeah, indeed, it's a big JKPL, no doubt. We saw a couple of big shots today. Well, it is really touching hearts nowadays. The cricketing vibe is here at Jammu University. And we're still waiting for the champion to rise to the occasion. And we shall come to know by 6th of January who is going to be the crowned champions in Big JKPL. So till then you got to wait. Anyone fed that one, that's high up in the air. Will it carry? No way. Falling well short of Asim Bashir there. And Sultan Warriors are coming back and crawling back into the game from nowhere. Now they are just 2 wickets away from snatching victory, and they're gonna taste it after a long time. And it's a must-win victory when it comes to the big JKPL. They needed victory over here. Flicked away nicely. Round the corner he goes.
But finest man Arjun Singh to perfection will just be one. 83 for 8. It's over number 13 wherein Adil Dada has got the ball and he's rolling his wrist over the ball now. He is trying his luck with the ball. Dada known for his quicker, not coming into play. He's gonna come up with that quicker, the one that Lala used it to produce. Boom boom. The quicker one used it to be of 130 plus, touching 120, 129. That's a high up in the air, and that's gone down to the boundary for 4. Just Bukhara 4 coming. Quality shot of the bat of LA. Does very well on that occasion. He rises. Oh, that is a nice one. Down the ground he goes and gets 4 for that important boundary coming. Dada trying to go with that straighter one, that straight triangle. Another single added. Are they going to push for 2? No, just a single. 89 for 8. With 1 ball to go in 13th over. 117 more runs behind. And these runs will surely help them to keep their hopes alive. That net run rate is going to be another important aspect in the game in this league-based tournament. Sultans also need to take care of that. They're conceding runs here. Bilaka boundary is coming. Another 4 to end the over here. Improvise, cleverly done. Smart from batter, smart work done. Another 4. And 13 gone, 93 for 8. 113 more runs needed from 42. Sultans need to bundle them out and restrict them around that 93 or below 100. That's going to help their net run rate cause also. Make it win-win from every corner. 42 balls, 113 more runs needed by nice gems. Required radius 16.14 and over. You're watching JK Sports Time, Facebook, more over YouTube, and it's also coming your way on Live Sports TV YouTube. Those who are new on JK Sports Time YouTube channel, you can subscribe and press the bell icon. We are also in Play Store nowadays. Just go there and install the app and be the part of JK Sports Time family. You can catch live scoring updates from Vijay Hazare Ranji Trophy area. SM80 is done, but we have Vijay Hazare, which is pretty alive. Even JKC is alive there. 2 wins and a 1 defeat. And that is going to cause them to great extent against the likes of Vidarbha, which is a strong side in Vijay Hazare. But JKC and their hopes are still alive with 4 tight games to come. Comes down the track. Oh, look at that one this time. Somehow managed to stop the ball and save with 3 runs. Zolo. This time he was vigilant to care of that, to take care of the boundary cushion. Sunnatul Islam is there, and that's high up in the air, and that is... Oh, he dropped! He dropped, Baba. What you have done. All the hard work goes in vain. And Baba at long gone. Take a look again. From this angle we shall come to know. High up in the air. There it is. And Baba does well. Baba does well, I believe. Baba does well. Take a look again. Oh, what's going on? He saved it. He saved a 6 for his team. It was gonna go all the way, but he does well. He drags it back into the play. Just a single. 3 singles on the trot. 96 for 8. 110 more runs needed. Slip headed to the fold. Straight to the fielder. There is Asim, who's so quick on the field with great reflexes. 96 for 8. 38 balls, 110 away. Comes down the track again. Drilled straight down the ground he goes. Bisects long off and long on. There is Muzaffar Tele, but it's beyond the boundary line. 100 up. That 100 brought to you by Just Bukhara. Driven straight. And it's gone into the fence. Again in the same direction, but this time it's Wasim Katsur, the flying bird behind stumps. In no time, in the nick of time, he whiffed up the bails. In a blink of an eye, bails are down, batteries are gone. 9th one down here. Exactly. There it is. But no more halla there. No more noise as he's gone.
100 on the board for the loss of 9. We are into the over number 15. And action moves to 15th over. With 1 wicket away, Sultan Warriors. And they are 106 more runs behind. Here is Zaidar into the attack. That's in the air. Shots of catch it. And Asim tried his level best, but can't make it to the ball. It's okay. 101 for 9. The first ball yielded a single. Asim tried level best time. Asim giving all to this and unable to hold on. But that was an easy one. It was dipping on him. That's a big shot again. Shots of catch it. Will it carry? No way. Again, Asim is in play. I think ball is in love with Asim here. He's trying to find where the Asim is. And once again, it goes straight to Asim. 2 balls down in the 15th over. Big shot, big shot. And that is... Oh, it's a massive. It's a monster. Just to Bukhara 6. It's indeed a big shot. Shahnawaz 1 is happy. ये जाहिर सी बात है क्योंकि अब आखिरी जोड़ी है, पर आपने कुछ समय जिक्र किया था कुछ समय पहले कि एनआरआर का यदि प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पे वो चीज़ भी जहन में रखनी होगी क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण, और सुल्तान चाहेगी कि कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए यहाँ टीम को। 17.82 भले ही इस समय रिक्वायर्ड रन रेट है, मैच जीत ना पाए एनजीसीसी, पर यह जल्द से जल्द इस पारी को समेटना शायद ये आपके लिए भी आने वाले समय में लाभजनक हो सकता है। 109 एक बार फिर ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक, पर यहाँ कुछ रन जरूर मिलेंगे। फील्डर हैं तैनात। नासिर गनाई के पास गेंद 1 रन और 110। 9 विकेट के नुकसान पे 14.5 110। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में एलए और नवीद की जोड़ी, और 25 बनाए 11 गेंदों से। यहाँ पे एक सिंगल और मिल जाएगा। नेल्सन स्कोरबोर्ड पे 111 111। 15 ओवर समाप्त, 5 ओवर का खेल, 30 गेंदें, 95 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी औपचारिकताएं पूरी करनी है बिग जेकेपीएल। छठा मुकाबला कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 10 बजे। पहला मुकाबला एनजीसीसी वर्सेस पैंथर्स के बीच, और फिर दूसरे हाफ में दिन के 1:30 बजे मुकाबला होगा सुल्तान वॉरियर्स बनाम वैली स्टार्स गांधरबल। बड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर, क्रिकेट का महासंग्राम। तो देखना ना भूलिएगा। सवेरे 10 बजे से लाइव एक्शन में जुड़ जाइएगा जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब के अलावा लाइव स्पोर्ट्स टीवी के साथ। 30 गेंदें, 95 रन जीत के लिए। नासिर गनाई 2 ओवर 25 रन 1 विकेट। और इस ओवर में क्या समाप्त कर पाएंगे इस पारी को? धीरे धीरे से शाम का समय, ढलती शाम के चलते यहाँ मुकाबला भी सुल्तान के पक्ष में, क्योंकि 95 चाहिए 30 गेंदों में। आपके पास विकेट ज्यादा सुरक्षित है। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में प्रयास तो करेंगे और कोशिश होगी बल्लेबाजों की कि पूरे 20 ओवर खेले जाएं, और क्या वहां तक पहुंच पाएगी टीम एनजीसीसी नाइस जेम्स क्रिकेट क्लब। नए ओवर की शुरुआत पारी का 16वां ओवर प्रारंभ होता हुआ। 30वां ओवर कोटे का 25 रन देकर के 1 विकेट। नासिर गनाई पहली गेंद, पैड पे टकराई, जोरदार अपील। हालांकि प्रश्न पूछ रहे हैं पर अंपायर ने उसको स्वीकार नहीं किया। और निश्चित तौर पे थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है, तो क्या यहां से पारी समाप्त हो जाएगी ये देखना होगा। फिलहाल 15 में 111 पे 9। Thank you, Swed and Sunnatul Islam. Thank you very much. Coming all the way from Pulwama to Jammu University ground, and here it is the decision pending on your screen. Pulwama, we're going to be in Pulwama this season again for that massive tournament coming up, Sarkar and company. And here it is on your screen, on a big screen. Coming up next, out or not out. Options in store, in play. Take a look again. Oh, looks like in a spot above the. Hits him around the knee roll, or the below the knee roll. Oh no, it's above the knee roll. Around the thigh pad area. Thigh. Where the femur bone is. The longest bone in the body. The longest bone. Sometimes we discuss scientific points, because swing of the ball, the in-swing and the out-swing, it deals with the physics, the branch of physics that's called as aerodynamics. That deals with the swing of the ball. We shall come to that. How it tends to swing both ways. Here it is, find it out. Ask it for the D or S. Now the question is where the ball is going. Umpire's call will save him. Hitting stumps will mean curtains are down. And today's action will halt here. We'll pack bags to hotel and tomorrow we'll be back again.
for another double header. Will it be review lost? That's another question in store. Find it out, and it hits him above the knee roll, but the leg is bending. It's bending a bit. Coming up next, ball. We're talking about that DRS. DRS loading. Over to ball tracking. Harji says the decision is made. $111. Nelson on the board for the loss of 118 पे 8, 15.1 ओवर की गेंदबाजी, 118 पे 9, 111 पे 9 संभवतः, और यहाँ देखा जाए तो 8 विकेट दिखाया जा रहा है स्कोर बोर्ड पे, और हमारे स्कोरर शाहनवाज वानी जी, यह आखिरी जोड़ी है, 111 पे 9 है। आकाश चौधरी 32 पे दिखाए जा रहे हैं, और आकाश चौधरी आउट हुए हैं, यह आखिरी जोड़ी है, और इस बार ऑफ साइड में एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में, और रन संख्या पहुंच गई है 112 संभवतः, 112 पे 9। निश्चित तौर पर यह आखिरी जोड़ी, और संभवतः थोड़ी सी दिक्कत आ रही है स्कोर टेकर में, जिसके चलते थोड़ा सा दिक्कत हमें भी स्क्रीन पे आप श्रोताओं को भी आ रही है स्कोर टेकर में। हालांकि आखिरी जोड़ी बीच में प्रयास चलता हुआ, और जल्द से जल्द इस पारी को समेटना जरूरी यहाँ पे, और कोशिश होगी कि अब आखिरी औपचारिकों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द इस पारी को समेटा जाए, ये प्रयास रहना चाहिए यहाँ पे गेंदबाजों का। इस बार एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, और ऐसे में देखा जाए तो अभी तक रन संख्या में वृद्धि जरूर होती रही है। इस ओवर में भी एक सिंगल आया है। एक बार पैर बड़ा स्ट्रोक खूबसूरती के साथ, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर, जस्ट मुखारा छक्का, 6 और जोड़ लीजिए। कमाल का स्ट्रोक, 118 तक पहुंच चुके, अंतिम जोड़ी प्रयास करते हुए इस समय टीम के लिए। $118 for 8. We're into the 16th over of the game.
Score is looking into it, and back to the game again with the last pair in the middle, LA and Akash Chaudhary. It's displayed as, and as per the two names are concerned, you have to go it in the same direction. And NGCC lost an opportunity here. They were very much in the game earlier on, but in the middle they lost the momentum. Arjun again, there is an opportunity. Is he stumped? Yes, he is, and that's it. And Sultan Warriors prevail in this game. And NGCC are left with just one opportunity, win that game and have 2 points on the points table to open their account on the points table. But looks like chances are damp as far as the qualification scenario is concerned. He is so quick there, he's not going to give you time to be back to the crease. So that's it we have for you from today's game, today's double header. We shall be back tomorrow. Until tomorrow, it's Assalamu alaikum and fi amanillah, and take care of yours. Assalamu alaikum and fi amanillah again.